हेलो एवरीवन एंड सबको वेलकम है यार। कल के लिए रियली रियली सॉरी। कल थोड़ा सा बिजी हो गया था और वाईफाई का इशू, एज मैंने बताया ही सबको। जब वाईफाई खराब होता है तो भाई फिर ढंग से कर नहीं पाता मैं स्ट्रीम, और कोई लॉजिक भी नहीं बनता फिर, क्योंकि इफ यू आर नॉट एबल टू हियर मी प्रॉपरली, इफ यू आर नॉट एबल टू सी मी प्रॉपरली और लैग होता रहे स्ट्रीम, तो कोई मतलब नहीं है उसका। इस वजह से आज किया, इस वजह से अभी दोपहर को किया मैंने। आई विल बी जॉइन माय सबीर भाई एज वेल वेरी वेरी शॉर्टली, ही विल बी हियर एज वेल, बट उनका कुछ स्ट्रीम ऐड का इशू है, so far he is not here, but he will be here with us very very shortly. Don't worry, hopefully उनका जल्दी sort out भी हो जाए. So we are going to talk about few things. Obviously कल का गेम we are going to talk about it. We are also going to talk about the upcoming games. कल के गेम में बहुत सारी problems, in the latter stages. वार का इशू, player getting red card, fights. So सब कुछ बात करेंगे. Good thing was we got the win. Bad thing was Casemiro's red card. So focal point वही है. We are going to talk about that first, and then we are going to, get along with the stream. So Musafir bhai, welcome to the stream. हाँ भाई, I think अभी ठीक ठाक है, right? अभी ठीक ठाक है. अभी absolutely fine. चलो, तो मुसाफिर भाई मैं वही बोल रहा था कि what are we going to talk about in the stream today? 2-3 चीजें हैं कल के गेम से. फर्स्ट हाफ absolutely flawless. Second half we are going to talk about it. And fight भी है, red card भी है, VAR again, referee decisions again. So Totally. सारी चीजों पे बात करेंगे. स्टार्ट करता फर्स्ट ऑफ ऑल the win, another win at Old Trafford. The manager talked about Old Trafford being our fortress, and he is making sure of that. Right. We are making sure of that. So overall, how do you feel about the win? I think like you said, first half was flawless. थोड़ा second half में I think until the 70th minute, even Ayrton Hag ने stress किया उस बात पे कि until 70th minute we were okay, we were doing very fine. But after that red card, जो भी हुआ, I think it was aggravated from both the sides. थोड़ा कभी कभार हो जाता है overdue when your teams are tussling with each other. तभी तक मैच तो मेरे हिसाब से इट वाज वन साइडेड, बट आफ्टर दैट रेड कार्ड ऑफ कोर्स यार एक प्लेयर कम हो जाता है तो बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं गेम में, राइट? डायनामिक्स चेंज, राइट? एंड फॉर्मेशन भी चेंज करना पड़ता है, बहुत सारे प्लेयर्स को अंदर बाहर करना पड़ता है. तो आई थिंक लाइक आई सेड सही गेम था, कुछ भी मतलब नथिंग बैड एज पर मैन यूनाइटेड. अगर फैन हो मैन यूनाइटेड के, अगर आप गेम फर्स्ट मिनट से आप एंड मिनट तक देख रहे हो तो यू वोंट फाइंड एनी फ्लॉज इन दैट गेम. जस्ट कैसे मेरे को कार्ड आप बोल सकते हो दैट वाज अ वन फ्लॉ व्हिच आई फाउंड. एंड क्योंकि देखो वो गोल भी स्कोर करे, इट वाज अ फ्लूक, इट वाज नॉट एम्ड एट द गोल, इट वाज जस्ट अ फ्लूक इन माय ओपिनियन. आई डोंट नो कि दूसरा के ओपिनियन डिफर कर सकते हैं, बट इट वाज अ फ्लूक इन माय ओपिनियन. सो ठीक ठाक ही खेल रही है यार, ठीक ठाक ही खेल रही है. द बैड थिंग इज आई थिंक डेविड डी गिया को क्लीन शीट डिजर्व करता था वो. ही वुड हैव बीन इन द रिकॉर्ड बुक्स इन yesterday's game, but I think he has to wait for one more match to do that, I guess. So, but yeah, in my opinion, the game was good. Yeah. Comment section में जो भी यार, thanks a lot for joining in. वरुण भाई, सोहम भाई, सबको वेलकम. ये क्वेश्चन है पुष्कर भाई, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है. पुष्कर भाई saying we should appeal that Casemiro dead, और मैं इस चीज पे बात भी कर रहा था. If we fail that appeal, most likely we will, क्योंकि हमारा पता ही है एफए के साथ क्या 36 का आंकड़ा है, तो वो सबको पता ही है. Regardless of whatever we will say, they will say like, "अरे तुमने तो गला पकड़ा है," जबकि वहां पे स्लोप है, he is going down, सबको दिख रहा है, and they are just laughing out. वो at the end, but he was shown a red card, and people should know that if we appeal and if we lose the appeal, it will be a 4-game ban. Totally. Yes. ठीक है, so I don't think we are going to risk another game for Casemiro, because we know that against us, it's gonna, the decision is going to be against us. Yeah. So Musafir bhai, 3-game की जगह 4-game ban, should we take the risk? No, absolutely not. Because देखो, it was a straight red card. As a fan, I'll say that, because आप जब गले पे हाथ रखते हो तो it should be a card, and he I think kind of earned it. ठीक है, बोल सकते हो कि जो it was like heat of the moment के लिए, उसके बाद में they I think they hugged each other. They were वही चीज बोल रहा था भाई कि heat of the moment भी नहीं, there is a slope.
Old Yeah, right. Trafford pace slow. If you look at the footing of Casemiro, वो basically वो actually Hughes को पकड़ने की कोशिश कर रहा है so that he is not going down the slope. Right. ठीक है, उसने ये सोच के नहीं किया कि साला मेरे को उसका गला पकड़ लेना, उसको मार ही डालूंगा. कोई इंटेंट नहीं है. दे आर लाफिंग इट आउट. उससे ज्यादा वी विल कनेक्ट दिस टू अनदर सिचुएशन जहां पे बेसिकली फिस्ट मारा है फ्रेड के चेहरे पे आयु ने. Exactly. But no one will Yeah, talk this about is that. I think this is no one will talk about that. No one will talk about that because they see when you talk about Casemiro ना तो वहां पे क्या situation होता है? Like we are talking about the footing situation right now, but FA will not see at the footing situation. They'll see कि he kept the hands on his neck. बिकॉज एफए का और यूनाइटेड का 35-36 का आंकड़ा है. इवन द रेफ्स आर अगेंस्ट अस. मैं हर मैच के बात नहीं करूंगा, बट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीजन वी हैव बीन गेटिंग ऐसे डिसीजंस मिल रहे हैं जैसे दूसरों को निकल जाते हैं इजीली डिसीजंस, बट यूनाइटेड की अगर बात करें तो हर वक्त अगेंस्ट ही होते हैं डिसीजंस फॉर सम रीजन. आई डोंट नो, स्पेशली दिस सीजन. प्रीवियस सीजन उससे पहले तो छोड़ ही दो, ये सीजन की बात कर रहा हूँ, स्पेशली दिस सीजन. तो ये तो लाइक स्टार्ट से चलते आ रहा है. एंड आई थिंक इसके बाद भी आपको ऐसे डिसीजंस देखने के लिए मिलेंगे. लाइक इवन एरिक टेन हैग इज फेड ऑफ इट. ही इज टेलिंग लाइक हमको ऐसे डिसीजंस के ऊपर क्या बोलते हैं इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए. ये तो होते रहेंगे. वी हैव टू प्ले आवर गेम एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. तो हम लोग भी यही आउटलुक के साथ चलेंगे. बट इफ यू स्ट्रेस एट दैट सिचुएशन, दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, आई थिंक जो स्लिप ने जो फिस्ट मारा, दैट वाज मोर एग्रीवेटेड. कैसेमिरो को वाज नॉट दैट एग्रीवेटेड. या And guys, जो भी है कमेंट सेक्शन में do share your views. What do you think? मैं सारे कमेंट्स लूंगा यार. Don't rush. ठीक है, कोई गुस्सा मत कर लेना. मैं सारे कमेंट्स लेते. You guys all know. So ये जो कुशागर का जो पॉइंट है गाइस सबके लूंगा. वेंकटेश भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर गिफ्टिंग 5 मेंबरशिप्स. सो भाई जिसको भी मेंबरशिप मिला है थैंक बोल दो वेंकटेश भाई को. एंड ही हैज बीन अ मेंबर हियर फॉर 5 months. So is Musabir bhai as well on my channel. So thanks a lot guys. With your support the channel keeps on going. तो कुशाल भाई का जो ये जो मैसेज है, मुसब्बिर भाई, आई थिंक दैट्स द appropriate way to go along. क्योंकि हमने देखा है this happens in Bundesliga where if you are not going with making the right calls on the pitch, the referees they have their interviews as well. What do you think about this? Exactly, they should be held responsible for their decisions. They should be doing in the Premier League also, जो Bundesliga से मैच कर रहे हैं वो लोग. एंड आई थिंक दैट साबित सर बहुत अच्छा पॉइंट है यार. मुझे उसमें कुछ भी गलत नहीं दिखा था. इट वाज अ परफेक्ट टैकल, परफेक्ट टाइम्ड टैकल. इट वाज फॉर सम रीजन आई थिंक मैरिनर वाज द रेफरी. फॉर सम रीजन आई हेट दैट गाय यार. मतलब इससे पहले भी उसके डिसीजंस देख लो आप. एंथनी मैरिनर के अगेंस्ट यूनाइटेड ऑलवेज हैव बीन फार्सिकल. बहुत गंदे डिसीजंस देता है वो. एंड आई थिंक कल भी वही हुआ मेरे ओपिनियन में. एंड चलो ठीक है यार, कैसे मेरे को रेड कार्ड जो भी हुआ उसके बाद में बहुत ज्यादा अच्छा ब्रेक मिला था. एंड इट वाज अ वेरी गुड पास बाय सैबित्जर. इट वाज अ वेरी गुड टैकल बाय हिम. वही 5-10 मिनट में उसने अपना क्लास दिखाया. ही इज टाउटेड वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स. एंड he should be questioned यार. Marin should be questioned regarding this one. And every ref should be questioned. It's not about only about United. अगर आप दूसरे टीम्स का भी देख लो कभी कभार, the referees should be questioned. And especially against United यार, वो पेनल्टी देख लो रियल सोसिएदाद की तरह. And उसके बाद I think ओलिसे का जो फ्री किक था, it was also taken a yard or two up front than the real जहाँ पे टैकल हुआ था. तो ये सब डिसीजंस है यार, ये सब डिसीजंस है. एंड इसकी क्वेश्चनिंग होनी चाहिए. ये सब क्वेश्चनिंग होनी चाहिए इसकी. बट फॉर सम रीजन पता नहीं यार प्रीमियर लीग ये क्यों डिसीजंस ले नहीं पाती ऐसे. वी हैव टू दे हैव टू डू समथिंग. अच्छा, और एक चीज है यार, वार में ना, वार के रूम में आई थिंक देयर आर अराउंड 5 to 6 people sitting watching the screens and watching the tackles, the fouls या फिर the penalty decisions from every angle. यार इतने बंदे जब बैठे वहां पे, आई थिंक यार वो मतलब एसबीआई बैंक में भी इससे ज्यादा काम होता है जितना वो वार रूम में हो रहा है आजकल. कुछ भी मतलब लाइक दे हैव बीन लाइक सीरियसली फार्सिकल यार. एग्जैक्टली. शहनाज भाई, उसको मन करे तो बर्मिंघम क्या, उसको तो यहाँ पे इंडिया पे बुला के मारो साले को. when you get decisions like this, तो उसके बाद फिर क्या ही बोल सकते हैं. एक चीज जो और है जो सबने मेंशन करा है, और एक चीज पहले मैं वेंकटेश भाई का कमेंट ले लूं. 3 games we should obviously get keep our winning record going. But at the same point of time, Musabir bhai, you talked about the Savitzer challenge. That's not a foul even in a Sunday. मतलब कहीं पे दुनिया में किसी भी लीग में that's not a foul. No, ठीक है. He has got the ball so clearly. उसने सीधा उसके पैर से बॉल लिया है. Rashford is through. He plays that pass. Rashford को रोकने वाला कोई है ही नहीं.
on the pitch. Exactly. Palace knows it's going to be 3-1, you know. और मतलब literally the reaction from the crowd inside the stadium, और वो आपको दिखाता है, you know, this is the point that, you know, Sir Alex also is making. Rashid made a run to clean tackle by Sabitzer. Exactly. इसकी जवाबदेही कौन देगा भाई? इसकी जवाबदेही कौन देगा? अरे भाई, because I watch matches on Being Sports sometimes because of 4K and like they what they do is जब tackles होते हैं, जब goals होते हैं, बहुत ज़्यादा slow motion में दिखाते हैं what went wrong या what went right. तो when Sabitzer tackled down, उसका भी tackle they were showing around 2-3 times, जो कि I think Sky Sports पे नहीं होता है, because Being Sports का जो Arabic commentator है, बहुत ही उम्दा commentator है भाई, वो उसने clearly बताया ये रेफ जो है इसको पक्का चश्मे की जरूरत है, बिकॉज ही इज नॉट सीइंग क्लियरली जो हो रहा है, बिकॉज ही थॉट कि स्टार्टिंग में भी ऐसे फॉल्स हुए which went क्रिस्टल पैलेस के हित में, एंड सेबिट्जर फाउल वाज नोवेयर नियर अ फाउल. ही क्लियरली सेड दैट, इतना जूम करके वो दिखा रहे थे, इतना स्लो मोशन में दिखा रहे थे भाई, इट वाज अ क्लियर डिसीजन यार, क्लियर डिसीजन था. आई मीन लाइक seriously the ref should be questioned yaar. You have a good point. There should be a committee of after matches the ref should be questioned about the decisions he gave in the game. There should be something post match like that, something like that. Yeah, exactly. So I'm saying 3 VAR decision against us. अगर VAR के decisions overall में ला लो तो 3 नहीं 30 होंगे सोम भाई. Seriously. You know, 3 नहीं 30 होंगे, शायद उससे भी ज्यादा होंगे, because ये मतलब कोविड के टाइम के बाद से where we used to get penalties, the moment Klopp started crying, although he's still crying because now Liverpool is not winning, तो वो अलग तरीके से रो रहा है. At that point of time, he was basically crying about the penalties, and we are not getting the penalties. We have seen that clear-cut penalties हमें नहीं मिले हैं, you know. So we will see how that goes. And Shubhat bhai, welcome to the stream. Prithvi bhai is saying we can win without Casemiro. We can win without Casemiro, but he is one guy who assures, you know, he protects the backline. Sabitzer उस तरीके से protect नहीं कर सकता. You know, as Venkatesh bhai is saying, Sabitzer और Fred उस तरीके से backline protect नहीं कर सकते. Sabitzer is very tough tackling. वो घुसेगा, वो बॉल निकालेगा तुम्हारे लिए. He won't keep on stopping. But that positional sense जो Casemiro की है, you know, वो बिल्कुल next level की है. You know, कैसेमिरो की पोजीशनिंग को जो वो जिस तरीके से सेंस करता है, और जिस तरीके से लिसांड्रो मार्टिनेज पोजीशनिंग, you know, forward passes करता है, these two guys are the best in the business at what they do at this point of time. मतलब कल लिसांड्रो के आगे एक बॉल नहीं जा रही थी, he already was there, you know, already वहां पे था. वो सोच भी नहीं रहा कुछ. He already knows what he has to do, you know. Exactly. He already know what to do. I think all of that's us. Sorry. Yeah. I think that पोजीशनल की बात करें तो आप कैसेमिरो एंड लिसांड्रो को कोई नहीं मार सकता, इवन इन द प्रीमियर लीग. मैं ये बात बता दूं आपको कि जो दोनों की पोजीशनल सेंस है, इट्स लाइक ब्यूटीफुल यार. मतलब देखने के लिए मजा आता है. सीरियसली, आफ्टर I think a long time we have players like Casemiro and Lisandro Martinez in our team. It's like seriously beautiful to watch them. If you talk about the positional sense, if you remove Casemiro out of the team, Lisandro comes first, and उसके बाद we don't have someone in the midfield with the same positional sense, I guess. तो थोड़ा सा risky है. And Fred and Sabitzer का डबल खिलाना भी थोड़ा सा risky हो सकता है. I think इसके previous comment में कोई किसी ने बताया इस बात को. I think Scott should be brought back because Scott ठीक है foul वगैरह करता है, but he breaks the game of play. That's important. He is injured for 2 weeks. He is injured for 2 weeks. I think he will be back, right? In the not in the next game, उसके बाद की गेम में वो आ जाएगा, right? लीड्स का जो वीकेंड में गेम है. तो मतलब अभी 2 weeks बोला अभी मैनेजर ने. 2 weeks में तो अच्छा he will be most probably fit by ये क्या बोलते हैं आपका Carabao, I think Carabao का जो फाइनल. अच्छा ओके. I'll say कि डिफिकल्ट तो नहीं होगा, बट थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कभी कभार मिडफील्ड में, कभी कभार ओवर रन हो सकते हैं. But it will totally depend on कि Sabitzer को कैसा ट्रेन करता है रिटन हैग in this few training sessions, what he puts in Sabitzer, because I think Fred is doing exceptional well यार. Fred's का seriously I देखो मैं भूल ही गया, फ्रेड का जो पोजिशनल प्ले कल था बहुत तगड़ा खेला उसने. आई थिंक उसके पहले के प्रीवियस मैच में भी उसने खेला था. आई थिंक थोड़ा सा पोजिशनल सेंस आ रही है, वो होता है ना संगत का असर. आई थिंक वो फ्रेड का अभी कैसेमिरो के साथ में वो संगत का असर हो रहा है, एंड ही इज हैविंग सम गुड स्ट्रिंग ऑफ गेम्स. तो आई थिंक फ्रेड शुड डू द जॉब. आई थिंक यार मुझे ऐसा नहीं लगता कि लीड्स का गेम इतना कुछ डिफिकल्ट होने वाले हैं 2 गेम. आई थिंक लेस्टर्स गेम विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट मेरे लिए.
Yeah. मेरे मेरे हिसाब से राइवलरी आ जाती है ना. यू आर ऑलवेज एड्रेनलिन वाला जो सीन होता है व्हेन यू प्ले अगेंस्ट योर लोकल राइवल्स. तो लीड्स उस पे थ्राइव करेंगे एंड दे हैव अ बेटर टीम देन व्हाट दे यूज्ड टू बी अंडर पीएलसा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. उस I टाइम पे guess तो yes. उनके बिल्कुल ओपन गेम होता था, जाके 4-5 मार दो. इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट, Yeah. यू नो. सो करण भाई, रूल यही है, अनफॉर्चुनेट बट रूल यही है कि 3 की जगह 4 गेम का कर देंगे. जहां तक मैंने पढ़ा है वो. विशाल भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है. पेनल्टी जो है हमें मिल गई, बहुत खुशनसीबी वाली बात है, एंड आई डू फील दैट वे. नहीं एक्चुअली देखो, इट वाज ए क्लियर पेन. अगर वो पेन नहीं देता तो उसको अलग से सब लोग उसका गला पकड़ते हैं, बिकॉज आई थिंक नहीं 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 कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता, बिकॉज इट वाज अ क्लियर पेन यार. कोई भी अंधा भी बोल देगा यार ये पेनल्टी है. तो आई थिंक जो एक बात आ रही थी ना, जो राइवल फैंस बोल रहे थे, द टॉप पॉइंट दे वर मेकिंग, अरे भाई, इट हैज गॉन फ्रॉम द हैंड. भाई, हाथ पे लगने के बाद भी तुम्हारा दूसरा हाथ ऐसे, तुम सलूट थोड़ी मार रहे हो किसी को, हाय करके बुला थोड़ी रहे हो कि पेनल्टी बॉक्स में दूसरा हाथ तुम्हारा इतना ऊपर रहे. तुम्हारे अगर बॉडी पे बॉल टच होके, अगर तुम्हारा, हमारे अगेंस्ट जो पेनल्टी दी थी लिसांड्रो मार्टिनेज, इससे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था. वो तो उसका हाथ बिल्कुल बॉडी पे था, तब दे दिया. Exactly. And that was given a pen. And so that time everyone were shut. Like कोई कुछ बात नहीं कर रहा था. They were like, हाँ भाई, नहीं वो तो पेनल्टी थी. But जब ऐसे हमको डिसीजंस मिल जाते हैं ना, तो like they get rattled about it. Exactly. When Ganesh was making points after points, 2 men for, Licha was like 2 men after covering for Casemiro as well. Bhai, to be very honest, I have heard Old Trafford loud, but the noise that they were generating in the final 10 minutes after the Casemiro red card for every challenge, they were like, we are up for it, and right. that's the that we need when we are a man down and we are protecting a 1-goal lead. It was all driven by the crowd. तुम कुछ भी बोलो, in the last 15 minutes it was absolutely loud, deafening loud. जहां पे पता लग रहा था कि they just want United to win, they just want United to get the results anyhow. So it was alive, it was definitely alive. Good afternoon यार, जो भी आ रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना. मुसब्बिर भाई का चैनल का लिंक जो है वो भाई टाइटल में ही है, टाइटल में ही है. So don't worry about going into the description, even टाइटल से उठा लो. ये क्वेश्चन बहुत लोगों का क्वेश्चन होने वाला है in the upcoming games as well. Musabbir bhai, Scott is injured. With what midfield combi do we start? Fred Sabitzer, or do we have other options? I think against Leeds, since we don't have McTominay, Fred and Sabitzer is the way to go. Sabitzer को थोड़ा बोलना पड़ेगा कि भाई तू थोड़ा पीछे रह के खेल, because you got the pace, you can run, you can cover, you can defend, So what do you think? Fred Sabitzer the way to go for the next 3 games? Exactly. We don't have any option. Exactly. And I think yesterday के मैच में दिखा दिया Sabitzer में कि he can run and he can tackle also, and he can turn defense into attacks, and I think Sabitzer will do fine. I don't see any problem with Sabitzer, because देखो, I was seriously, ऐसा नहीं कि यार नया प्लेयर ले तो एक्साइटेड हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, मैं एग्जैजरेट करूंगा. बट जो 5 मिनट या फिर 10 मिनट खेले Sabitzer ने, मुझे उसमें दिखा दिया कि यार प्लेयर में दम है. फॉर सम रीजन ही वाज रॉटिंग ऑन दैट बायर्न का बेंच. वो दिखाएगा नेक्स्ट मैच में. आई थिंक ही विल शो व्हाट ही इज रियली मेड ऑफ. The thing is, the reason he was rotting on Barca bench, how you replace Goretzka and Kimmich? Musabbir bhai, how do you replace Goretzka and Kimmich from the midfield? ये बताओ मेरे को. नहीं वो बात तो है नहीं, but still at least he should game some game time, which was like unexistent था उसके लिए, right? तो मेरे हिसाब से, क्योंकि बायर्न भी थोड़ा सा बीच में, yeah. But when you have the world's, basically regarding the best versatile player, right, information, and you have powerhouse like Goretzka, then you are like, it's a tough luck, man. But you're starting over both those guys. नहीं यार, मतलब अगर मैं इसको जब आरबी लाइप्जिग में देखता था ना, आरबी लाइप्जिग में जब देखता था मैं उसको, मैं आई यूज्ड टू रिगार्ड हिम लाइक, मैं टू बी ऑनेस्ट, अनपॉपुलर ओपिनियन होगा, बट मुझे गोरेत्स्का से उसका गेम प्ले कुछ अच्छा लगता था. आई थिंक बिकॉज वो ही वाज द रनिंग मशीन इन दैट आरबी लाइप्जिग का. तो क्योंकि कभी कभार बायर्न म्यूनिख में कुछ प्लेयर का आपको गेम दिख के नहीं आता, बिकॉज यार टीम ही ऐसी बनी है, टीम ही इतनी परफेक्ट है.
कि कभी-कभार इंडिविजुअल गेम प्लेस आपको दिख के नहीं आते। इसके लिए आई यूज्ड टू अडोर सैबित्जर, बट जब बायर्न में आया तो उसको गेम टाइम ही नहीं मिल रहा था, व्हिच इज ऑब्वियस। जो आपने जो बोला वो तो बहुत ऑब्वियस है कि इनके ऊपर उनको नहीं मिले, Exactly. किसी को भी नहीं मिलेगा। Shweta, welcome to the stream. Thanks a lot for joining. Should young players like Manu or Zidane be given chances in the absence of Casemiro and Eriksen? To be very honest, at this point of time, I don't think we are going to make changes like those. I think we are going to play the likes of Fred and Sabitzer, because they have the experience. If we had FA Cup games or Carabao Cup games, we should have tried them. Now that we have PL games, and we have game against Barcelona, so I don't think we are going to mess around. What do you think about that, Sabir bhai? And I think Anshu bhai, yeah. ये वाला question, Sanket bhai, he will be available for the Barca game. He will be fresh. Don't worry. Former Real Madrid player being fresh against Barcelona, we all know how it's gonna go down. Yeah. So question of Shweta, talking about the midfield, or we should just I think Manu can tuck in. What do you think? Because I think Erik ten Hag is a big admirer of Manu. थोड़ा सा उसको मिल सकता है, like not the whole match, not the 2 matches, but at least one match जिसमें वो he's playing around 50 to 60 minutes in at least one match against Leeds. मुझे ऐसा लग रहा है, because Mino has been showing कि यार वो है, he can play in the top level. Because आप last few matches देखो जिसमें Mino आया था, especially in second half, he has that tactical genius in him कि he knows exactly कि मुझे किस टाइम पे क्या passes करने हैं. Like वो नेव नहीं दिखाता कि ऐसा नहीं दिखाता कि मैं अंडर 18 से मैं आके अभी खेल रहा हूँ, ऐसा नहीं दिखाता. उसका गेम में थोड़ी मैच्योरिटी है, तो आई थिंक he can play. Exactly. But as I said, since you have to keep your guys ready for the Barca game as well, 2 tough legs, I think all of a sudden throwing those guys in the in the oven, basically you can say, is not gonna work in my opinion. ठीक है, bench के लिए रखो, we don't have options. Scott injured है, so Manu will definitely play a part. In the meanwhile, we can laugh at Liverpool conceding 3 against Wolves. I have made a very good video on that Liverpool game. I was doing a Premier League roundup. It's still in edit, but मुझे सच में वो स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, because a team like Liverpool, seriously यार, मजा तो आ रहा है. And I'm not क्या बोलते हैं, मेरे को shame भी feel नहीं होता जब मैं लिवरपूल के ऊपर हंसता हूँ. Exactly. Why should we feel the shame when we laugh at Liverpool? कोई मतलब नहीं है. Just returning the favor. Yeah, just returning the favor. Srinidhi bhai, we can use Manu as well, but as I said कि थोड़ा सा I think we are already looking at the longer run. So I think we might go with Savizar and Fred, और जहाँ पे if we are winning the game, we might give Manu 20 minutes, 25 minutes if he's comfortable in the game. Shiraj bhai is saying playing at OT looks difficult for opponents now. We are on a good run of winning games. Fans का environment बहुत ज़्यादा, it helps a lot, and that goes without saying, Shiraj bhai. So that's why I mentioned the fans, because in the last 15 minutes, the way they propelled the team, that's where we made the difference. In the earlier years, our fans used to get very, very nervous. Yeah. Totally. I think the players are doing massive. The manager is giving fans that hope कि we can do something this season. We will do. जो भी हमारे हाथ में हम लोग करके दिखाएंगे आप लोगों को. And the players, every tackle they do, they are going in and they are showing like how passionate about they are about the tackle, or like small instances जो पहले नहीं दिखने के लिए मिलता था हमको यार. पहले seriously it was like क्या बोलते हैं उसको, crowd भी कभी कभार dead लग जाती थी, या फिर players भी इतना ज्यादा passion नहीं दिखा पाते थे for some reason. But this season it's all changed, man. Seriously. Exactly. We will have a chance, definitely, Clayton. We will have a chance. I don't think we are going to opt for him straight away. I think we will try definitely, first of all, for Frankie de Jong again. If we can get him, otherwise, I think we will definitely try to, get Sabitzer. And Srinidhi bhai, कोई bias नहीं है. StreamYard पे थोड़ा सा issue होता है. यहाँ पे कोई bias नहीं है. सबके comments लेता हूँ. I put up your comment as well. So, निश्चित भाई, Martial. मुसाफिर भाई, हम मार्शल के बिना अपनी स्ट्रीम कैसे बिना मार्शल के बात करें, कैसे स्ट्रीम चल सकती है? मैं सोच रहा था कि वरान ही ऐसा बंदा है कि थोड़ा सा मोम का बना है भाई. ये मार्शल में भी स्टार्ट हो गया, मतलब ये सीजन तो मतलब आता यार एक
15-20 मिनट के लिए वो दंगा कर देता है, मतलब ऐसा गेम है उसका यार, देखने का इतना मजा आता है। फिर सडनली न्यूज आती है नेक्स्ट मैच में मार्शल नॉट अवेलेबल, मार्शल इज इंजर्ड। यार क्या हो रहा है, मतलब सीरियसली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं वही या तो चीज बोल मेडिकल रहा था टीम की कि गलती मतलब है, क्या ही। या तो मेडिकल टीम की गलती है, या तो कुछ गलत चल रहा है भाई पीछे। नहीं नहीं, मेडिकल टीम की गलती नहीं है, प्लेयर ही गलत है पूरा का पूरा। यू कैन नॉट कीप ऑन गेटिंग दैट मच इंजर्ड यार, ये मेडिकल यार टीम पे भी नहीं डाल सीरियसली सकते यार, हम। सीरियसली। सो But yeah, you have to give him सांचो भी that. ट्राई। You have to give him that. When he is playing at that number 9 position, the team's fluidity is something else, bhai. एग्जैक्टली। सो शुड ही बी ट्राइड एट नंबर 10? व्हाट डू यू थिंक? Hmm. सांचो Well, एट it नंबर depends. 10, व्हाट Like डू यू थिंक मुसाफिर भाई? I still want to see him play. I still want to see him play. क्योंकि जब तक हम लोग नहीं देखेंगे उसको ये सीजन वो कैसे बन के वो आया है, तो तब तक तो मैं नहीं बोल पाऊंगा इस बारे में। बट ही कैन प्ले एज अ नंबर, ही कैन प्ले एज अ प्ले मेकर, ही कैन प्ले एज अ या प्ले मेकर, बट it can't be totally मैंने वही dependent on चीज him. Yeah, या as a 10 मैंने मैंने वो you चीज can't पहले भी totally be बोला। dependent on him. Yeah, but he can play, he can एग्जैक्टली। play as a number 10. Yeah. अजय भाई, आई एम फाइन, हाउ आर यू? ये पोस्ट से चिपक कर भाई देखो, डेहिया इज लिमिटेड एज अ कीपर, वी ऑल नो। और ये चीज हम इस पे पहले भी 10 बार बात कर चुके हैं, हम इस पे 100 बार बात करेंगे, बट वो चीज चेंज नहीं होनी। यू नो, ही इज स्टिल वेरी रिलक्टेंट टू कम आउट एंड टेक द क्रॉस, और वो पोस्ट पे ही रहता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन टाइम, वो हर वक्त का है। ही हैज मेड सम चेंजेस जहां पे ही स्वीप्स द बॉल अ बिट बेटर, बट ही स्टिल Yeah. कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट, ही स्टिल कैन नॉट पास। तो वी नीड टू जस्ट मूव ऑन, बिकॉज हम हर दिन यही बात करें मेक्स नो सेंस, Yeah. बिकॉज वी ऑल नो अब जब तक हमारे साथ है, वी जस्ट होप कि वो अच्छा करता रहे। सिंपल सी बात है, क्रिटिसाइज करना इज फाइन, वी हैव डन इट, वी विल कीप ऑन डूइंग इट। सो आगे आगे बढ़ते हैं। भाई सोहम भाई, ही शुड बी सोल्ड। हमारे पास जैसे ही स्ट्राइकर आएगा, आई थिंक वी विल सेल हिम। व्हाट डू यू थिंक मुसाफिर भाई? क्विक कमेंट, सेल हिम इन द समर? Totally. ऑलराइट, मूविंग ऑन, बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स हो गए, मैं सबके कमेंट्स जल्दी जल्दी ले लूं। सोहम भाई सेइंग डोंट रियली गेट व्हाई शॉन बैनबिसाका नॉट क्रिएटिंग चांसेस फॉर बेगहॉर्स्ट। भाई देखो, जब शॉ और लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं ना, तो शॉ और रैशफोर्ड का ध्यान ये होता है कि भाई वो आपस में ही कर ले, उनका ये रहता है, बिकॉज दे हैव दैट वो राइट हैंड साइड से थोड़े बहुत क्रॉसेस आना चाहिए, बट एंटनी वो क्रॉस करता नहीं, बैनबिसाका वो क्रॉस बिल्कुल करता नहीं। सो फिर लगता है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड से क्रॉसेस क्यों नहीं आ रहे, बिकॉज लेफ्ट का गेम पूरा चल रहा होता है। रैशफोर्ड और शॉ का पूरा इंटरलिंक और वन टच और ओवरलैपिंग वो सब चल रहा होता है। और व्हेन यू लुक एट हाउ वेगहॉर्स्ट प्लेज, वेगहॉर्स्ट का काम है कि भाई दो बंदों को साइड में ले ले बस, Exactly. हाँ, कि रैशफोर्ड को जगह मिल जाए। That's how they operate. That's why not lot of crossing. I think हम जब तक desperate नहीं होते, हम तब तक crosses नहीं डालते। अगर हमारा one touch two touch play से if we are scoring goals, we don't have to get desperate और हम long balls मारना चालू करते हैं। वो बिल्कुल last moment के लिए, वो बिल्कुल last moment के लिए है। Exactly. I think that you had a great point of Weghorst. उसका गेम प्ले वो है. He is not here to score goals. He is here just to क्योंकि फॉर्मेशन ही ऐसा बना है कि जो विंग्स होते हैं, बिकॉज देखो एंथोनी का प्रोफाइल वो नहीं कि वो आपको क्रॉसेस देगा इनबॉक्स. ही वोंट डू दैट. इवन एरन वन-बिसाका फ्रॉम द राइट, दे विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ गेम. एंड लेफ्ट, लाइक आपने बताया कि शॉ एंड रैशफोर्ड में अभी इतना अच्छा इंटरकनेक्शन बन चुका है कि दे आर डूइंग एवरीथिंग दे कैन ऑन द लेफ्ट साइड. वेगॉस का काम वही है. ही विल टेक द प्लेयर्स साइडवेज to give Rashford the space, to give Anthony the space, to give Bruno Fernandes that space to come in the middle of the park and score goals. वही काम है बस वेगॉस का भी. जैसे आपने बताया कि जब डेस्परेट रहेंगे तभी क्रॉसेस आएंगे. It will be different scenario. But right now the game plan is like this. ओके, संकेत भाई, रियल मैड्रिड को चांस मिला था, आई थिंक 70 मिलियन वो देना नहीं चाहते 28 साल के बंदे के लिए, एंड दे हैव कार्वाहाल फिट, सो दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक दे हैव गॉन फॉर Cancelo. Should I say Exactly. Liverpool lost 2-0, not 2-0? If we know, we know. बैंटर का अलग ही मजा है, बैंटर का अलग ही मजा है। वेंकटेश भाई saying ब्रूनो का पेनल्टी मस्त था, ओल्ड स्टाइल, बिल्कुल ओल्ड स्टाइल, कीपर को गिरने दिया एंड देन ही टुक द पेनल्टी। Sabir bhai, he had missed his last two penalties, so pressure was definitely on him, but he was absolutely calm and done. Totally भाई. I still देखो ठीक है, हो जाता है कभी कभार मिस. I think Bruno knew that the pressure was on him and he knew what he has to do and he did the right thing मेरे हिसाब से. And in future also he'll be doing that. Exactly. कोई अकेडमी में अच्छा सीबी नहीं है क्या भाई? सीबी है अच्छे, बट बहुत यंग है एंड दे नीड लोन डील्स। महंगी था तो महंगी, इंजर्ड होने से फुर्सत नहीं, तो
फिश इज फाइन, बट उसको भी अभी काफी गेम टाइम चाहिए. बेनेट इज फाइन एज वेल, बट इनको काफी गेम टाइम चाहिए अभी. दे आर नॉट रेडी एट ऑल. जो बोलते हैं ना कि 18-19 साल के बंदे को तुम क्या प्रेशर में घुसा सकते हो, तो वो अभी नहीं घुस सकते. एग्जैक्टली वो अभी नहीं घुस सकते. और ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट मारा संकेत भाई. लिवरपूल फैन सेइंग इमेजिन विन अस. आई डोंट वांट टू. ओहो नो वेज एट दिस क्या भाई मोमेंट saying? नो Absolutely not. Never wanted to be them. Yeah, Never wanted to be exactly. them. Yeah, even when they were Gravenberg. winning. Yeah. Like Gravenberg in summer, yes or no? No. Kind of. I don't know why, but no. I'd still go to Frankie de Jong. Yeah. अगर Frankie de Jong नहीं मिलेगा तो Sabitzer, yes. But Gravenberg for some reason I don't know why. चलो. I think आपको क्या लगता है he is fit in that system? Lot for sharing. Gravenberg का मैंने to be very honest, when a player goes out of the radar, जहाँ पे आप देख ही नहीं रहे उसको खेलते हुए, you know, Exactly. तो फिर किस तरीके से predict predict कर सकते हैं? बोल नहीं सकते. Ajax was totally different. Ajax was totally different. Ajax में डॉनी भी बहुत ऊपर था. But when you play for United, you know, मैनेजर को चाहिए होगा तो लाके दे दो, कोई दिक्कत नहीं है. But I don't think at this point of time he is our priority. And Venkatesh bhai, thanks a lot for sharing all the post-match comments. Casemiro crossed the line, you saw that, however, and I'm happy with the inconsistent refereeing. You know, it's finally about time where our manager gets out and he starts talking about how we are getting detailed in the game. I think, bhai, I don't know if you saw that or no. After full time, he was looking so in rage. जैसे वो रेफरी के पास चल के गया, I was like seriously कॉलर पकड़ लेगा रेफरी का. इतना गुस्से में था वो, and he spoke something to referee. Surely वो कुछ बोला होगा रेफरी को. The way he was speaking to referee, he was in rage. So he is mad about, you know, the farcical decisions what our team's getting day in day out, every match. Exactly. Jonathan, we talked about this, bro. Ayush should definitely have got the red card. That goes without saying. कैसेमिरो बार्सा वाले मैच में बिल्कुल फ्रेश उतरेगा, बिल्कुल निश्चित भाई. Thanks a lot for joining in. और Real Madrid, former Real Madrid against Barca, so it's always going to be a feisty one. You know, Varane और को देखना है मेरे को. You know, there will be a lot of fouls. There will be a lot of fouls. There will be a lot of fouls from definitely. Garnacho, he was not looking happy when he was substituted, but he understood the task. Yeah, and that's important. Yeah. Exactly. Shinati bhai saying why people are so shocked about Liverpool position. You know, 30 साल में, you know, one time they won Premier League title to show for, and they were like, we are the most dominant team in the history of Premier League. No, like seriously, it's not about क्या बोलते हैं उसको shocked. It's about you know, the mindset of the players and the mindset of the coach right now. Because I used to rate Jurgen Klopp कहाँ मतलब like seriously, I still rate him, but फिर भी यार जो उसका ये था, अभी लिवरपूल तो ऐसे दिख रही है यार, कोई भी टीम आ रही है घर पे मार के चले जा रही है, मतलब आगे से पीछे से हर तक से. तो seriously. Exactly. Visaka felt exhausted. भाई अब वो लगातार खेल रहा है, but yeah, Dalot is back, so he won't be playing that many games. Venkatesh भाई, किसी भी प्लेयर को हर हफ्ते में दो गेम खिला दो, हर 8 दिन में 10 दिन में 3 गेम खिला दो, he will be exhausted. And that goes without saying. You know, so this is a good question. Musafir bhai, I will ask your comment on this first. Neuer. खुशी भाई, खुशी. मतलब मेरे लिए तो ये कोई क्वेश्चन भी नहीं है. अटक रहे हो मुसाफिर भाई? Guys, मुसाफिर भाई is gone for a while. He will be back. Don't worry. भाई सबके क्वेश्चन के फटाफट मैं आंसर दे दूं. जो भी आया, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन गाइस. 2 मिनट दे दो मुझे, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूं पहले. मैं राया के लिए जाऊंगा भाई. आई विल गो फॉर राया. ठीक है, डेफिनेटली हमें पैसे भी थोड़े बचाने हैं. Venkatesh bhai is talking about and how protects our players. Exactly, 100%. Thanks a lot for sharing, Venkatesh bhai. Bhai, ठीक है, you know, he will have one of those games where he becomes a bit selfish, but overall the way he plays, you know, we all know the amount of difference that he makes. So भाई रिटायरमेंट हाउस नहीं है, but as I said, गोलकीपर 34 years की एज में, you know, 34 years की एज, it's fine. If he can, और हम उसको टॉप वो नहीं ले रहे भाई, उसको बैकअप की बात कर रहे हैं.
भाई he has made a good move. As I said guys, सबके comments लूंगा मैं, you know. So यूवे का गोलकीपर, चलो भाई देखते हैं संदीप भैया लेते हैं या नहीं. ओके चलो भाई आज I have Twitter space at 9 p.m. I am trying for a Twitter space. Let's see how that works. You know, always great to listen to everybody as well. So कोई किम जोंग उन तो हूं नहीं मैं कि मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर. So समझे भैया, मैं वही बोल रहा हूँ, रेड कार्ड ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग इंटेंट नहीं था. सेकंड ऑफ ऑल, if you look at it properly, he was trying to protect himself from going down, you know, from going down. So Saman bhai, welcome to the stream, thanks a lot. Neves in summer, bhai Neves in summer kitne mein? When we talk about players like Neves, I always go for the price first. मुझे प्राइस बताओ, उसके हिसाब से बोलूंगा नेवेस yes or no. और भाई जिसके कमेंट्स मिस हो गए हैं उसके मैं फिर से ले लेता हूं. Which goalkeeper should be, ये तो हो गया, ये हो गया. शिराज भाई saying in the summer window we can go for Martial type striker. भाई हम ओसीमैन के पीछे जा रहे हैं, you know, ओसीमैन के पीछे तभी जा रहे हैं. So निश्चित भाई saying आप पीएल में देखने के लिए लिवरपूल को स्क्रॉल करना पड़ेगा. वो दो भाई भाई साथ में बैठे हैं, चेल्सी एंड लिवरपूल. बिल्कुल भाई, मोस्ट लाइकली हम यही करेंगे, बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ वी स्टार्ट मैग्वायर टू डील विद द फिजिकलिटी ऑफ लेवेंडोव्स्की. या आई वोंट बी सरप्राइज्ड. या तो मैंने नीचे के भाई सारे कमेंट्स ले लिए हैं, थोड़े बहुत कमेंट्स जो रह गए हैं वापस से कॉपी पेस्ट कर दो यार, वापस से कॉपी पेस्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है. भाई कैसेमिरो विल नॉट होल्ड हिज फीलिंग यार, कभी भी नहीं. कैसेमिरो इज नॉट दैट टाइप ऑफ प्लेयर जो अपने आप को वो कंट्रोल कर पाएगा. ना ना ना, ही इज समथिंग एल्स मैन. दैट्स व्हाई आई लव हिम द वे ही इज. एंड तभी एक ही चीज बोल रहा हूं ना मुसब्बिर भाई कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज नॉट इंटेंट. ठीक है, रेड कार्ड, आई टोटली एग्री विद संदीप भाई, इट वाज अ रेड कार्ड. द मोमेंट मैंने ट्वीट किया ना, पीपल वर लाइक अरे इट्स अ रेड कार्ड. अरे भाई मुझे पता है इट्स अ रेड कार्ड, आई एम जस्ट सेइंग कि भाई वो इंटेंट नहीं था. Exactly, it was not when you look at the intention. और जब as a VAR referee, you are basically looking at the footage like twice or thrice, 10 times, you know, and you can clearly see कि भाई वो बंदा नीचे जा रहा है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है. That's why, you know, वो उसने गलती से पकड़ लिया, he is done. It was a red card straight away. Exactly. मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना भाई, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि यार जो वार रूम में जो 6-7 लोग बैठे हैं ना, उनसे ज्यादा काम तो वो एसबीआई का बैंक एम्प्लॉय कर लेता है. सीरियसली बता रहा हूँ, इतना गंदा उनका, लाइक सीरियसली मैन, इतने आदमी लोग को बस नाम के लिए बिठाया है. आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग देयर. शाहनवाज भाई सिंह बैंटर करने से मैंने संदा बॉन्ग आई नो यार, निधि भाई वेरी नाइस गाय. सो भाई देखो, सिंपल सी बात ये है कि अगर बैंटर से बुरा लग रहा है देन यू कैन नॉट यू नो, तुम इग्नोर ही कर दो भाई, फिर फैन चैनल का कोई मतलब नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. नॉट बीइंग हार्श निधि भाई, इफ यू आर लुकिंग एट मी, नॉट बीइंग हार्श, बट बैंटर यार, मेरे को जितना बैंटर और हेट मिलता है ना, you know, and it's normal भाई, it's banter is a part. भाई चेल्सी और सिटी के फैंस भी आते हैं यहाँ पे बैंटर करते हैं, बैंटर इज फाइन. हाँ, कोई पर्सनल ना हो, अगर इफ समवन इज गेटिंग पर्सनल, उस पे अगर बुरा लग रहा है देन इट्स फाइन. बट अगर कोई पर्सनल नहीं हो रहा और देन यू आर फीलिंग बैड, देन मुझे नहीं लगता दैट्स द राइट वे टू गो. बट एनीवे, जुराडो को भाई 2 साल अभी और लगेंगे. ही इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट, बट 2 साल इसको और लगेंगे. कुछ भाई वेलकम. ये सारे मैंने देख लिया है. कोई अच्छा गोलकीपर है, मैंने राय की बात की है. करण भाई, व्हाट डू यू फील मुसब्बिर भाई, व्हिच गोलकीपर टू गो फॉर? I think if you look in a realistic way, Raya is the only option we have right now. in like realistic way. Near also, I think जो बायन के साथ जो हो रहा है उसका, अगर वो मिल जाता है तो इट्स लाइक सोने पे सुहागा. But still, Raya is the viable option we have right now at hands. Exactly. Venkatesh was saying कासिम कैरेगर से पूछो लिसांड्रो मार्टिनेज के बारे में. अब अभी वो बात नहीं करेगा भाई उसके बारे में, मुंह से लिसांड्रो का नाम ही नहीं लेगा वो. भाई ये देखो, और we all know what has happened with Salah. Yeah man, seriously, a big payday. जब से उसकी सैलरी बढ़ी है, जब से उसका वो जो नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तब से तो लाइक उसका गेम ऑफलाइन हो गया भाई. भाई देखो, हमें सारे बिल्कुल, मतलब लिसांड्रो, he is never the same after Lisandro Martinez tackle and laugh.
Yeah, वो मतलब the tussle with him. I still remember, man. मतलब Seriously. it's one thing to basically tackle a person. मतलब he is basically rocking the Premier League for 4.5 years, Salah, and all of a Yeah, sudden पहले महीने में आता है बंदा and he basically tackles you at Old Trafford and he laughs at your face. I was like, yeah. कौन है बे तू? And उठा के is उठा just के ऊपर से shoving his shoulder in him and मतलब saying ऐसे something कर to रहा him. है कि आपने बताया Like मजाक कर रहा seriously. हाँ, seriously man. हूँ, you know? लिसांद्र भाई उसके साथ में अगर कोई टसल करेगा तो कुत्ता बना देता है वो But सबको. बिल्कुल बिल्कुल हिम्मत भाई थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन स्टे सेफ भाई देखो कल्ट हीरो तो बन ही चुका है वो ऑलरेडी उसमें तो कोई बात ही नहीं है हमें ऐसे ही चलना चाहिए दानिश भाई देखो रेड कार्ड है इसमें कोई डाउट नहीं है बट व्हेन यू सी द रेड कार्ड वहां पे इंटेंट भी देखना पड़ेगा ऑब्वियसली ही पिक्ड अप स्ट्रेट रेड है इसमें कोई डाउट Exactly. नहीं है बट एज Exactly. रेड डेविल इज सेइंग भाई वो चोक नहीं कर रहा था उसको 2 सेकंड भी नहीं एंड दे वर बेसिकली लाफिंग इट आउट Yeah, वो yeah. बेसिकली उस चीज के ऊपर हंस रहे थे यू नो सो And see, ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं होता और एक चीज होती है ना अंशु भाई कि देखो when the coach is happy, when the manager is happy with your red card, then you're doing the right things. And even Eric Ten Hag एग्जैक्टली was like he was looking very okay with it. He was like he one for the team kind of thing, right? So yeah. एग्जैक्टली एज निश्चित भाई सेज एंड इवन शाहनवाज भाई सेइंग एंड कैसे मेरो टू एंटनी अबे साले तेरे चक्कर में मेरे को किसी दिन हार्ट अटैक आ जाएगा वो 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 वाला सीन याद है यार बाबू राव का तेरे चक्कर में मुझे हाँ, मेरे वही आत्महत्या करने के दिन आ गए. Unai Simon भाई he is good Venkatesh भाई but I don't think he's United level good Raya is better. और Raya is better. Raya I will take any day over him Yeah. Venkatesh भाई कोई एजेंडा नहीं अगेंस्ट Unai Simon he's a good player Yeah. but you know Raya is better. मेरे हिसाब से Raya is better and this is the same thing that निश्चित भाई put up as well so माइक मिनियन भाई देखो एक तो पैसे भी बहुत ज्यादा लगेंगे एंड रियलिस्टिकली मुझे तो नहीं लगता नहीं. कि वो आएगा राया टू स्पोर्ट्स रिटेन इन स्टार्स नहीं समा भाई कहां से राया टू स्पोर्ट्स मतलब उसको अगर करियर में कोई ट्रॉफी नहीं जीतनी तो बिल्कुल जाए या यू नो फिर वहां पे जाके क्या करेगा ब्रेंटफोर्ड ही रह ले यहाँ भी ट्रॉफी नहीं जीतेगा वहां भी नहीं जीतेगा एटलीस्ट ब्रेंटफोर्ड में ही कल्ट हीरो है एनी वर्ल्ड हीरो या राइट यू नो ब्रेंटफोर्ड में एटलीस्ट इज अ कल्ट हीरो एग्जैक्टली. do you have we have the best PL partnership or even in Europe भाई देखो when you look at on paper Upamecano and Delete you know Yeah. very good On paper, yes. yeah when you look at Stones and Diaz they are very good Totally. so I won't say it's in the best in Europe but I will definitely say top 3 Top 3. what do you Yes, think yes. Musabir? Totally. I think बारसा का जो बैक है वो भी सही है यार. It should be also talked about. So I think top 3, top 5 I guess. Top 5 yes. Top 5 yes. But with the matches going on like seriously we will be top 1 में आप ले सकते हो. जैसे हम लोग अभी like last few matches खेले हैं. थोड़े like देखो अभी नई जेलअप हो रही है टीम तो यार we can't talk about like top 5 or top 3 but seriously the way they have put in strides totally yaar. Exactly. No one saw Brighton. No one saw Brentford doing the way they are doing it. So Exactly man. Exactly. कैसे मेरे भी लाइक आयु करे तो ठीक मैं करूँ तो सारा कैरेक्टर ढीला है. या भाई चलो एटलीस्ट कहीं तो see this guy gets a lot of slack. अगर वो ये चीज करता है ना तो लोग इसके ऊपर हंस रहे हैं कि भाई कैप्टन बनने की कोशिश कर रहा है. अगर वो ये चीज नहीं करता ना लोग इस पे हंसते हैं. सो जो जिनका एजेंडा है जिनको हेट करना है वो किसी भी रीजन पे करेंगे. देखो गेम जब उसका खराब चल रहा था ना इवन आई हैव स्लैक्ड हिम आई हैव सेड थिंग्स अबाउट हिम कि देखो वो है वो जो चीज है वो है बट ही इज अ गुड गाय एंड समटाइम्स पीपल कभी कभार यार वो नहीं खेल रहा तभी उसको बैठे मतलब गाली देना या उसके अगेंस्ट एजेंडा चलाना इज रॉन्ग बट व्हेन इज प्लेइंग एंड डूइंग समथिंग रॉन्ग तभी बोलो यार तभी तो बनता है बोलना बट दिस थिंग्स आर way too downwards. Osimhen or Sesko? Osimhen all day long यार. Osimhen all day long. भाई आंख बंद करके गोल मार देगा भाई वो आंख बंद करके. Osimhen is finished product. Swam भाई Sesko
you know he Still in work has in that progress. Yeah. he has that caliber जो पहुंच सकता है, बट अभी वो है नहीं, Yeah. अभी वो उस लेवल पे पहुंचा नहीं है. So at this point of time I am easily going with someone like Osimhen. Yeah. आगे देखो, you never know, अभी तो सेस्को की उम्र क्या है भाई, 19 साल का लौंडा है वो अभी. Exactly. सिंपल सी बात है, 19 का है. So भाई रोबर्टो सांचेज, उनाई सिमोन, मिन्योन, at this point of time Raya for 15 million sounds so tempting to me to bring him to Exactly. the club. बिकॉज Exactly. अगर तुम्हें चाहे तुम्हें हेंडरसन, अगर हेंडरसन को इफ यू आर थिंकिंग टू मेक योर नंबर 1, फिर हमें कीपर की जरूरत नहीं है, फिर बैकअप के तौर पे हम किसी को भी उठा सकते हैं, Yeah. यू नो, बिकॉज राया बैकअप बनने नहीं आएगा. सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट डीन हेंडरसन एज द नंबर 1, वो मैनेजर के ऊपर है भाई, यू नो, वो मैनेजर के How ऊपर is है. his? Yeah. तो Yeah. Yeah. इफ यू थिंक डीन हेंडरसन मैनेजर का नंबर 1 बन रहा है, तो फिर हमें कीपर की जरूरत नहीं है, बैकअप लाओ. या फिर डेहिया का वेजेस बिल्कुल कम कर दे, 150 करके उसी को बैकअप रख लो, फिर गोलकीपिंग का इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो गया, वो सॉर्ट आउट हो गया, फिर हमें पैसे नहीं खर्चने. एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट सेंसिबल मूव. जहां Why? पे अगर Do तुम्हें, you think? Sorry to interrupt you. Do you think कि De हाँ, Gea will stay at United if अगर उसके wages cut हो? Because he knows like right now he is at a age कि even if he goes and हर टीम United नहीं होती, अगर वो कोई और भी लीग जाता है तो उसका जो गेम टाइम होगा लिमिटेड नंबर्स में होगा एंड इतना ज्यादा तो वेजेस उसको कहीं नहीं मिलेगा. So what do you think about that? मैं वही बोल रहा हूँ कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर हिम इट्स वेरी सेंसिबल कि वो यहीं पे रहे. मेरे हिसाब से बहुत सेंसिबल है कि उसका यहीं पे रहे. Right. तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि अगर हमने कीपर देखना है, अगर हम देख रहे हैं कि भाई हेंडरसन को ही बना दो, यू नो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिर तो डेहिया को नंबर 2 रख के जस्ट इन्वेस्ट इन अदर. अगर एक सीजन के बाद हेंडरसन काम नहीं आ रहा, तो भाई उसको फिर भी Then we बेच can लो. think about that. You're still Yeah. getting value. Exactly. Exactly. And he can yield good money. He can yield you good money. मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि वो आराम से तुम्हें तब भी 20-25 मिलियन दिलवा देगा, बिकॉज ही इज इंग्लिश. तो वो तुम किसी Yeah. भी कीपर को, किसी भी टीम को दोगे, यू नो, सो दे विल इजीली टेक हिम. हैरी केन के ऊपर भाई देखो, हैरी केन अगर तुम्हें समर में हैरी केन मिल रहा है फॉर 50 मिलियन तो ले लो. ये 80 Yeah. मिलियन में हैरी केन अगर अवेलेबल भी है तब भी मत लो. कोई लॉजिक नहीं है भाई. 3 साल के लिए बंदा लेके 80 मिलियन में, ठीक है, एंड दैट टू हाई वेजेस पे, कोई लॉजिक नहीं है. 3 साल के बाद, 2 साल के बाद फिर से स्ट्राइकर ढूंढो, तब तक जो स्ट्राइकर होंगे वो कहीं और चले जाएंगे. I think sensible options Osimhen होगा. ठीक है, थोड़ा महंगा आएगा, but I think he is the right person right now. क्या like form में भी है and he is young and he can surely give you at least 15 to 20 more than 20 goals. जैसे हमारी midfield है अभी, तो surely he can. बिल्कुल बिल्कुल. टॉप 4 में ब्राइटन रेस इन द टॉप 4 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आई डोंट थिंक सो भाई. मतलब दे आर डूइंग वेल, बट आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू बी इन द टॉप 4, बिकॉज टॉप 4 और उनमें अभी थोड़ा सा गैप है. Gap है. Top 6 you can talk about top 6. At least यूरोपा और कॉन्फ्रेंस का, या कॉन्फ्रेंस का उनको प्लेस मिल सकता है. डेफिनेटली. Yeah. बिल्कुल. अगर वो भाई वो अगर कॉन्फ्रेंस भी खेल गया, दैट्स ह्यूज फॉर देम. Yeah, exactly. It's massive result for them, यार. एग्जैक्टली. वो एक साल पहले कौन सोच रहा था कि भाई ब्राइटन जो है, एंड दैट टू दे हैव लॉस्ट देयर टॉप प्लेयर्स. Exactly. अगले still साल उनका doing. चले जाएगा. भाई, what's your thought on Kairo Mitoma? भाई मितोमा, इस पे we talked about in previous few streams. You know, he is absolutely nailing it. मतलब कहाँ से उसको लेके आए 5 मिलियन में. क्या You know, the way he's playing, the way he's showing confidence. मैंने तो FPL में भी डाल दिया था इस गेम वीक के लिए, और 11 पॉइंट दे दिए ब्राउंडे ने. यार सीरियसली यार, काइंड ऑफ अडोर हिम यार. सीरियसली मैं बहुत ज्यादा अडोर कर रहा हूँ उसको. मतलब ऐसा बंदा है ना यार, बिल्कुल. you can't just just यार नहीं डिसरिगार्ड नहीं कर सकते उसको यार. जबरदस्त चीज है यार, कुछ अलग चीज है. क्वालिटी दिखा है. वन सीजन वंडर बोल देना इज वन थिंग, बट ही इज शोइंग दैट क्वालिटी कि भाई बंदा, मतलब मैं हूं यहाँ पे. एग्जैक्टली. दैट गोल अगेंस्ट लिवरपूल इन द लास्ट मिनट यार, क्या फ्लिक करके वो लाइक कल भी इन द 88 मिनट ही स्कोर्ड. कल भी इन द 88 मिनट ही स्कोर्ड in a perfect time. perfect time. एग्जैक्टली. मैं भाई बोल रहा हूँ, मैं कल मैंने दो पंट लिए थे मैंने एक्चुअली, और आई ब्रॉट इन द टीम पिनॉक को स्टार्ट कराया था मैंने इसके ऊपर, क्या नाम है, ट्रिपियर के ऊपर.
ठीक है, पिनॉक स्टार्ट कराया, ही गेव मी अ क्लीन शीट और मिटोमा लेके आया था एंड्रेस परेरा की जगह। अच्छा। सो बोथ ऑफ देम वर्क। तो मैंने बोला चलो everything worked for you yesterday then. बहुत बहुत टाइम बाद मेरा कुछ काम आया है। भाई देखो, this is what I think as well, but the manager already talked, to Henderson, and he has a conversation. So मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता the bridge has been burned. मेरे हिसाब से वो सीन नहीं है। He can still have a career at Old Trafford, but वो totally वाली चीज है। From where he comes back in the summer, किस तरीके से होता है। This was Casemiro's first red card. ओ भाई साहब, ये मुझे पता नहीं था निश्चित भाई। आई थॉट ही वुड हैव टेकन। ये इस पे देखना पड़ेगा मुझे, इसको इस पे देखना पड़ेगा, फर्स्ट रेड कार्ड देखना पड़ेगा भाई। ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसका फर्स्ट रेड कार्ड है करियर में। शाहनवाज भाई, हाँ सॉरी सबीर भाई, ब्रेंटफोर्ड में रहेगा तो एटलीस्ट कराबाओ फाइनल तक चला जाएगा और शायद जीत भी जाए, मगर स्पर्स नहीं। भाई मुसाफिर भाई इज अ बिट बिजी, तो मैं सबके कमेंट्स ले रहा हूं। आवर ट्रायंगल्स टू स्टेडियम एंड सीरीज है, बिल्कुल भाई। सेस्को रहा है, वी ऑल नो भाई। भाई जिसके कमेंट मिस होता है वापस से डाल दिया। Anshu bhai, just give me 5 minutes, okay? I'll be back, okay? Okay. चलो भाई, मुसाफिर भाई विल बी बैक इन 5 मिनट्स। वी नीड बॉल कैरियर इन द मिडफील्ड, बिल्कुल भाई चाहिए, बिल्कुल चाहिए। देयर इज अ रीजन वी हैव ब्रॉट समवन लाइक Sabitzer, फर्स्ट स्ट्रेट रेड। चलो ओके, समझ गया भाई, समझ गया, फर्स्ट स्ट्रेट रेड। चलो ऐसा बोलो ना भाई, मैं वही सोचू कि फर्स्ट रेड इन हिज करियर। मैं दिमाग हिल गया मेरा, मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है भाई। हाँ भाई, ओनाना कर सकता है, बट ओनाना इज ऑलरेडी प्लेइंग भाई, ओनाना इज ऑलरेडी प्लेइंग भाई। ही स्टार्टेड द सीजन ब्रिलियंटली, उसके बाद से ही हैज बीन घोस्टिंग, 50 मिलियन मैक्स सिंधी भाई, 15 मिलियन मैक्स। मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि भाई नीचे आएगा भी तो 150 180 पे रहेगा, एंड दैट्स स्टिल लॉट ऑफ मनी, दैट्स स्टिल लॉट ऑफ मनी, सिंपल एज दैट। स्ट्रेट रेड, मैं वही सोच रहा था भाई, कंफ्यूज हो गया था मैं भाई। वी नीड समवन लाइक फ्रैंकी डियोंग। इन शॉर्ट वी नीड समवन लाइक फ्रैंकी डियोंग। दैट्स द वे इट शुड बी, that's the way it should be. So 100%. No, we should not be mad at Casemiro. Why should we be mad at Casemiro? Not at all. Those who watch the video, those who watch the game, they know he was not trying to act in a violent way. Simple as that. He was not acting in a violent way. भाई जो अब हो नहीं सकता उस पर क्या ही बात करे सोम भाई, so भाई best week for us. भाई देखो, मुझे हैरी केन से कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बट मैंने वही बोला 50 मिलियन में हैरी केन मिल रहा है, ले लो। वी नीड ओसीमैन, बिल्कुल भाई, वी नीड ओसीमैन, दैट गोज विदाउट सेइंग। हमें ओसीमैन चाहिए, दैट गोज विदाउट सेइंग। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें किसी को डाउट होना नहीं। आई एम नॉट डिसरिगार्ड। लोग ये समझ लेते हैं कि जस्ट बिकॉज आई, इसका मतलब भाई फॉर मी it's simple, it's very simple. Harry Kane for 50 million, it's a go, absolute go. क्योंकि तीन से साढ़े 3 साल मिनिमम लेके चलो, 3 साल मिनिमम ही विल गिव यू। अगर बैड नहीं हुआ, हम बहुत अनलकी रहे तो फिर वो अलग की बात है। बैड नहीं हुआ तो वो अलग की बात है, otherwise the way he can, with the Premier League experience, it's a कोई ऐसा नहीं है कि भाई मेरा कोई एजेंडा है अगेंस्ट हैरी केन, simple as that. We should be bloody man or Anthony man. My Anthony needs to understand that.
एंटनी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट कि भाई अगर वो लड़ाई शुरू कर रहा है, थोड़ा सा उसको अपना, ठीक है भाई, यू एब्सोल्युटली लव द क्लब, चलो ठीक है, बट थोड़ा सा यूज करो दिमाग, थोड़ा सा दिमाग यूज करो, डोंट लूज इट। सिटी वर्सेस स्पर्स में किसको सपोर्ट करोगे भाई? आई डोंट केयर टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई डू सी स्पर्स पुटिंग अप अ चैलेंज एट होम। मैच जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो अलग की बात, बट दे विल डेफिनेटली पुट अप। तो सब जगह जाएंगे, अभी बेचेंगे, मार्च तक वेट करो, मार्च तक वेट करो भाई। स्पर्स आर नॉट इवन इन द रेस, स्पर्स की बात हटा दो। सो भाई स्पर्स का क्या सोचना, स्पर्स का नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई भी करे। आई डोंट थिंक यू हैव वॉच्ड द वीडियो, ही वाज ट्राइंग टू बैलेंस हिमसेल्फ, उसने गलती से पकड़ लिया भाई, उसने मुक्के वुक्के नहीं चलाए। ही वाज नॉट ट्राइंग टू फाइट ओवर देयर, ही वाज बेसिकली आफ्टर दैट। भाई हो जाए यार, होगा, मार्च तक वेट करो, मार्च तक इट्स डेफिनेटली गोना हैपन, मार्च तक इट्स डेफिनेटली गोना हैपन। स्पर्स वर्सेस सिटी प्रेडिक्शन भाई, स्पर्स I think will put up a challenge, but I don't think they have enough. I am going with a 3-2 to City. I am going with a 3-2 City. Talil bhai, welcome to the stream. Brilliant game. Brilliant game. मैं थोड़ा ऑफिस का भी काम चल रहा है, रियली सॉरी, जस्ट मुझे एक सेकंड दे दिया करो बस। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। 3-0 सिटी फॉर मी भाई। आई डोंट थिंक सिटी कीपिंग अ क्लीन शीट, आई डोंट थिंक सिटी कीपिंग अ क्लीन शीट। सो भाई मैं यूजुअली सिटी वगैरह के गेम्स के वॉच अलोंग मैं करता नहीं, टिक टू यूनाइटेड, तो यूनाइटेड वाले गेम्स के वॉच अलोंग आई विल डू 9 o'clock। आई एम डूइंग अ स्पेस ऑन ट्विटर फॉर द फर्स्ट टाइम, सो होपफुली यू गाइस कैन जॉइन इन एज वेल। भाई इनोसेंट नहीं बोलूंगा, बिकॉज वट एवर द रीजन वॉज, यू ग्रैब्ड, यू ग्रैब्ड एंड दैट्स अ रेड। भाई आई नेवर, मैं पहले भी बोल रहा हूं, now the real season begins for Arsenal. Now the season begins for Arsenal. अभी तो एवर्टन ने औकात याद दिलाई है, अभी देखते जाओ। वेल सेड भाई, वेल सेड। वो उसको भी वैल्यूएशन में ऐड कर देंगे, देखते जाओ। अभी तो शुरू है भाई, इट्स गोना गो थ्रू आउट द, अभी अगले 1.5-2 महीने ऐसा ही चलेगा, अभी ये 1.5 महीना भी ऐसा ही चलेगा, देखते जाओ भाई। I don't think it's gonna be a draw. बिल्कुल भाई, सांचो को खिला सकते हो अगेंस्ट लीड्स, निश्चित भाई, बिल्कुल 100%। So by saying the sale which is expected to interest initial bids of 4 billion, भाई 4 billion is nothing for them यार। मेन इश्यू दूसरा है, मेन इश्यू इज द अमाउंट ऑफ मनी दे नीड टू इन्वेस्ट, जो डेप्थ है, उसको हटाना। ओवरऑल इट विल कॉस्ट देम अराउंड 6.5 billion। ओवरऑल इट विल कॉस्ट देम 6 to 6.5 billion। सिटी विल लूज टुडे, चलो भाई देखते हैं। नो भाई, मैं भाई यहाँ पे आई एम नॉट रनिंग अ एजुकेशन सेंटर थोड़ी चला रहा हूँ भाई। वी हैव डिफरेंट व्यूज एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट रोबोट्स, दैट्स इट। We can have different views and we coexist. We talk about the game, we talk about the club we love. Simple as that. Greedy Glazers, तो ये तो अंडरस्टेटमेंट है भाई। Greedy Glazers, it's a understatement. Glazers की भाई क्या करनी? We all know how they are. ठीक है, तो Glazers greedy, ये अंडरस्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ा अंडरस्टेटमेंट है कि भाई Glazers are greedy. Glazers greedy नहीं है, Glazers are absolutely parasites जो वर्ड है ना, हमें वो यूज करना चाहिए उनके लिए, वो यूज वर्ड करना चाहिए। सो इट इज व्हाट इट इज। बट भाई जिसको भी मेंबरशिप मिली है कर्टेसी ऑफ वेंकटेश भाई, अगेन हैज गिफ्टेड, अरे भाई एक तो मेरे को ही मिल गई, उप्स। भाई जिसको भी मेंबरशिप मिली है, प्लीज फिल अप द फॉर्म फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। जिसको भी मेंबरशिप मिला है,
Please fill up the form from the description. थैंक यू भाई, मेरे चैनल का मेंबरशिप में कोई भाई आई डोंट इवन नो, मैं फोन पे भी नहीं चला रखा, पता नहीं कैसे आ गया. Yeah, he will be back. Bhai, he is not a cartoon. If you think he's a cartoon, then we are definitely on the wrong path. He is not a cartoon. He stretches the game like no other one. No, it was not. I don't think we were going to give Savitzer more than 10 minutes anyway. I don't think we were going to give Savitzer more than 10 minutes. But since we had a man down and Savitzer did really well. भाई आयु का तो क्लियर कट था भाई, वो तो इंटेंट था, उसमें इंटेंट था, उसने हाथ चलाया था. रैशफोर्ड का तो अलग का, सॉरी कैसेमिरो, ही वाज स्टिल ट्राइंग टू, कि भाई वो गिर रहा था, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था. दैट वाज ही वाज ट्राइंग टू डू, क्या ही बोल सकता हूँ भाई मैं. भाई वही करना पड़ेगा. मैंने शायद एक बार इस स्ट्रीम में सबको दिखाया था कि हाउ टू यूज इट. इस वजह से अब मैं जाके डिसेबल करूंगा भाई, मैं जाके डिसेबल करूंगा. वेंकटेश भाई थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट. सो भाई भाई उसने बोल दिया ना, उसने फाइनली ही टॉक्ड अबाउट द रॉन्ग डिसीजंस. he finally talked about the wrong decisions. See you soon guys. आज रात को 9 बजे स्पेस है on Twitter, so do join if you can. ये करता हूं भाई, आपको स्ट्रीम करता हूं अभी. भाई ये तो ज्यादा हार्श हो गया, ये तो ज्यादा हार्श हो गया, बट चलो ठीक है. वी हैव डिफरेंट. नो आइडिया सौमदीप भैया, नो आइडिया. हाउ मच did they cost? No idea. Why you cannot just go out and protest against our own player? We don't have anyone. It's not like we are having 4 strikers and we need to sell Martial. It's like it's not the case. It's not the case. We have seen that. It's not the case for us, where you go out and you are just, हमारे बंदे हैं strikers खेलने के लिए, so we can get rid of them. It's not like that, unfortunately. ऐसा केस है नहीं. अगर ऐसा केस होता तो अभी तक मार्शियल जो है वो कब का जा चुका होता. अगर ऐसा केस होता तो मार्शियल अभी तक जा चुका होता. कोई उसमें डाउट ही नहीं है. बट द थिंग इज वी डोंट हैव अ स्ट्राइकर. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास स्ट्राइकर नहीं है. जब स्ट्राइकर नहीं है तो हमें मार्शियल से काम चलाना पड़ रहा है. मार्शियल से काम चलाना पड़ रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. हम चाहते बहुत कुछ है, बट एज फैंस वी हैव लिमिटेड थिंग्स दैट वी कैन डू. ये टीम के ऊपर है, ये मैनेजर के ऊपर है, एंड लेट्स सी व्हाट ही डज इन द अपकमिंग विंडो. दैट्स वेयर वी. सो मार्शियल बिकेगा भाई, मार्शियल बिकेगा. एक बार हमारे पास बंदा तो आ जाए जो खेलने वाला हो, मार्शियल तो बिकेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है. मार्शियल विल बी सोल्ड, बट हमारे पास एक बंदा होना चाहिए ना उस तरीके से कि जो रहे भाई, जो रहे. सो ही विल बी आउट भाई, ही विल बी आउट भैया, कोई डाउट ही नहीं है उसमें. पेशेंस सबका जा चुका है, मार्शियल विल मेक वे फॉर एम्बापे. अरे भैया ऐसे सपने नहीं देखते. we all know we are going to go for ओसीमैन नहीं मिला तो देखते हैं भाई. मैकनील इज टू यंग, अभी तो वो लोन पे है. मैकनील इज ऑन लोन, तो मैकनील खिला सकते हैं भाई, बट नॉट द सॉल्यूशन इन माय ओपिनियन अभी. नॉट द सॉल्यूशन इन माय ओपिनियन. So we have a double game week coming
कमिंग अप। दोनों का गेम भाई वी ऑल नो लीड्स के साथ है, सो होपफुली वी गेट द जॉब डन। लीड्स बियल्सा वाली लीड्स नहीं है भाई, लोग याद रखना। बियल्सा के टाइम पे भाई बिल्कुल ही वी यूज्ड टू हैव अ फ्री रन, it's not gonna be like that, इस टाइम पे, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज को। नहीं भाई वाई गर्नाचो भाई, वाई सब नहीं भाई, कोई चांस ही नहीं है। वी नीड टू डिफेंड, वी हैड टू डिफेंड आवर टेरिटरी, हमें गोल डिफेंड करना था भाई, सो वी सैक्रिफाइस्ड एन अटैकिंग प्लेयर, दैट्स इट भाई। आई वोंट माइंड ब्लॉविच, मैंने पहले भी बोला है भाई। आई थिंक दैट वाज नॉट डेहिया's fault and no one expected it to go inside, it was just pure luck। चलो भैया देखते हैं, we can keep our fingers crossed। Yep. देखा भाई, वो जा रहा था and we talked about it, हमने इस पे बात भी की है। बिल्कुल यार, 100%। नहीं है भाई, किएजा और अल्वारेज का प्रोफाइल सेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत डिफरेंट है प्रोफाइल। अरे बहुत सही भाई, मैं खुद चिकन खाऊंगा भाई, मैं खुद चिकन खाऊंगा टू सेलिब्रेट लिवरपूल्स डाउनफॉल। नो वी वोंट। एक प्लेयर, इट्स नेवर अबाउट जस्ट वन प्लेयर, we have more than enough to go out and get wins against Leeds as well as Leicester, but yes, when you have one of those players who's basically protecting the back four out, then you have to be a bit more conservative in your approach at times when you are playing away from home. At home, no. Away from home, yes. And still could not win। कुछ भाई ये भी तो लिखो, and still could not win। सारी चीजें लिखो ना, सारी चीजें लिखो, and still could not win। भाई that tackle by Sabitzer, that was our third goal। That tackle by Sabitzer was our third goal, but unfortunately that was given as a foul। जो रेफरी, ठीक है, उसने फाउल दे दिया भाई। नो आई डोंट, ही उसका कोई एम्बिशन नहीं है संदीप भैया, वो उसने दिखा दिया इन द समर। इफ ही रियली वांटेड टू डू समथिंग, ही वुड हैव मूव्ड इन द समर, इजीली जाके रियल मैड्रिड का नंबर 1 स्ट्राइकर बन सकता था वो। बट एनीवेज, देखते हैं समर में क्या होता है। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली। जैन भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। आप बताओ भाई, मैं इस पे क्या ही बोल सकता हूँ शहनावाज भाई, दैट साउंड्स टू मी लाइक अ कॉकी स्टेटमेंट। ये अगर तुम अपने ही जो तुम्हारे से बात करने यहाँ पे आ रहे हैं लोग, यू कैन नॉट गेट कॉकी विद देम। यू कैन हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट यू नीड टू हैंडल द बैंटर, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई पर्सनल होने का कुछ मतलब नहीं है। that's what I feel। वेलकम बैक मुसब्बिर भाई, वेलकम बैक। अरे भाई, आई वाज ट्राइंग टू सेंड अ सुपर चैट, आई डोंट नो व्हाई, कि मुझे दिखा रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग बार-बार। उससे ट्राई करो ना, क्या बोलते हैं, लैपटॉप से ट्राई करो, फोन से शायद ना जाए। नहीं, आई वाज ट्राइंग इट फ्रॉम माय पीसी, आई विल ट्राई बाय फोन। एक मिनट। हाँ, कभी-कभी हो जाता है उस तरीके से, जहां पे वो जाता नहीं है। गाइस, दोबारा से ना बोलना पड़े यार, जय भाई ने भी एक गिफ्ट दिया है, तो जिसको मिला है वो ले लो। And please make sure that you are filling out the form as well in the comment section at the same point of time।
एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ मुसब्बिर भाई का चैनल मैं भाई डिस्क्रिप्शन में नहीं डालता, मैं लिंक में ही डालता हूँ, तो फटाफट क्लिक मारो और फटाफट से सब्सक्राइब करो, सिंपल सी बात भाई। फॉर मी पेन गोज विथ अ विन, ऑब्वियसली वी विल Exactly. लाफ एट लिवरपूल। फॉर मी देखो भाई वो अलग की बात है, दैट वाज वन ऑफ दोज गेम्स, जहां पे हम 5-0 हार गए, that was one of those games. We got them. We got them at Old Trafford. They were much more fancied, and we played with Lizardo, we played with Malacia, and we got the job done. So with this team, with proper members, it's gonna happen. And because of this, Chelsea has made they are able to draw against Fulham. Nobody can now stop them from finishing it. I literally watched the 90 minutes that day, Musabir bhai, Yeah. and I was literally shocked. To be honest, that I was expecting something at least क्या बोलते हैं उसको, एक at least a goal, और एटलीस्ट की दिखे कि हाँ भाई कुछ नया किया इस टीम ने, इतने सारे प्लेयर्स को लेने के बाद एटलीस्ट कुछ एक चीज दिख जाए कि हाँ भाई कुछ नया हो रहा है चेल्सी, बट इट वाज सेम ओल्ड। मुसब्बिर भाई, ये जो बोलते हैं ना कि मेरे घर का फिक्स करना है मेरे को नल, और मैं Exactly. अपना जो है ना जाके नेम प्लेट बाहर सही कर रहा हूँ घर के बाहर का। चेल्सी ने ये किया अपने साथ, साला चाहिए Yeah, I स्ट्राइकर, guess. तो सीबी भी ले आए हैं, विंगर भी ले आए हैं, बट साला स्ट्राइकर कहाँ है? वही वही वो वही ऐड आई नहीं गेस करता दैट्स क्या, टेस्ट कहाँ है? तो साला यहाँ स्ट्राइकर कहाँ है? नहीं एक्चुअली में भाई ऑल्सो और एक चीज है ना यार, तुम देखो दे न्यू फ्रॉम द स्टार्ट कि ये टीम टिक क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि हमारे पास स्ट्राइकर नहीं है। एंड मुझे तो ऐसा एक भी प्लेयर नहीं दिखा जो एग्जैक्टली। स्ट्राइकर के प्रोफाइल के साथ में उनका नाम जुड़ा हो। आई नेवर सॉ अ सिंगल प्लेयर जो स्ट्राइकर पोजीशन में खेलता है, उसके साथ में चेल्सी का मतलब लाइक एटलीस्ट एक रूमर भी आया हो। नहीं आया, नहीं आया। No, they have brought in Fofana, उनके पास ओबामेयांग है, but you all know बट Fofana यार यंगस्टर है, ठीक है? एग्जैक्टली ठीक है, ओबामेयांग you don't fancy at all। तो भाई तुमने 120 मिलियन जो एंजो फर्नांडिस पे खर्च किया भाई, तुम्हें स्ट्राइकर की ज्यादा जरूरत थी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। शुगर भाई सेइंग लिवरपूल योर वे टोटली फिक्सचर इजी होगा भाई, एनफील्ड पे कोई भी यूनाइटेड का गेम इजी नहीं होता। ना। ये हम कितने भी हम अच्छे फॉर्म से जा रहे हो एट एनफील्ड, कोई भी यूनाइटेड गेम कभी भी इजी नहीं होगा, नो सिंपल सी वेज। बात है। या एंड प्रीमियर लीग में भाई लिवरपूल का फॉर्म कितना भी खराब हो, व्हेन देयर इज अ बिग गेम, they will be ready for it, just like हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं अगेंस्ट राइवल ऑपोजिशंस, they do the same and they won't want कि भाई हमारे ऊपर डबल कर जाए यूनाइटेड। ट्रू 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 ट्रू। What भाई, we are hyping a guy that has won 5 Champions Leagues, ये देख रहे हो पंजा? Exactly. We are hyping Exactly, a and guy that's the difference. That's the difference. that's the difference। 5 सीएल वाला बंदा है वो, मल्टीपल ला लीगा वाला बंदा है वो, मल्टीपल क्लब वर्ल्ड कप वाला बंदा है वो। कैसे भाई मेरा इतनी कौन सी ट्रॉफी लेगेसी है भाई उसकी, इतनी बड़ी लेगेसी he has left behind at Real Madrid and has joined us, एग्जैक्टली so we will surely bark about it। भाई टैग लगा के घूमेंगे भाई, the Casemiro plays for us, we will hype him like mad, to be honest, एग्जैक्टली। especially me। Yeah, I will। नहीं भाई, I will start Maguire or I will start someone like Shaw। What do you think, मुसब्बिर भाई? मैगवायर का वो शाउट आउट अच्छा था, क्योंकि लाइक यू सेड, लाइक यू मेंशन बिफोर कि वो लेवेंडोस्की के लाइक फिजिकलिटी से डील कर सकता है, एंड दैट्स द थिंग आई एम लुकिंग आल्सो कि यार हाँ कर सकता है ये बंदा। ठीक है, थोड़ा सा डिफेंस में दिक्कत होगी हमको इन बार्सिलोना के मैच में, बट आई थिंक दैट अगर हमारी मिडफील्ड एप्ट खेलेगी तो आई थिंक डिफेंस को उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, एंड आवर डिफेंस कैन कवर अप इफ Casemiro and Fred are playing in a double pivot, surely they can cover up, because दिख रहा है भाई यार, ये अगर गेम से दिख 15 रहा है ना। फिनिश करे तो फिर तो मजा ही आ जाए, बट मुझे नहीं लगता इतना नीचे नहीं जाएंगे लगता, वो। नहीं कर सकता, बट करेंगे तो मजा। हाँ करेंगे तो मजा, मजा, वो एक अलग अलग फीलिंग आएगी। हाँ भाई बिल्कुल। चेल्सी वाले मैच में हर मोमेंट के बाद साला बॉयली पे ऐसा लग रहा था आईपीएल का कैमरामैन उठा लिया हो, मतलब हर कुछ भी मिस हो रहा वो बॉयली के ऊपर कैमरा डाल रहा। मैंने बोला भाई मैच दिखा ले भाई,
बॉयली की शक्ल दिखाने के लिए थोड़ी पैसे मिल रहे हैं तेरे को, इधर बंदा मिस कर रहा है या फिर दे आर नॉट हैविंग अ गुड अटैक, वो बॉयली के ऊपर कैमरा दिखा रहा है। मैं बोला भाई क्या ही बोल सकता हूँ इस चीज पे अब तो। थैंक्स अ लॉट, आई रियली अप्रिशिएट। बट वही है यार, देखो यू कैनॉट गेट कॉकी, मैं वही चीज बोलता हूँ हमेशा। भाई ये वाला पॉइंट एक बहुत अच्छा पॉइंट मारा है अनिल भाई ने। मुसब्बिर भाई, व्हाट डू यू थिंक? Zidane to Chelsea for me would be scary. I can say that, but again, मैंने जिडान को अभी तक रियल मैड्रिड को कोच करते हुए देखा है, उस दूसरे टीम को नहीं देखा है। तो फॉर सम रीजन आई नो बहुत लोग इससे मतलब एग्री नहीं करेंगे दैट जिडान नो, बट समवन एल्स आई विल सी लाइक अभी मार्केट में कौन अवेलेबल है एग्जैक्टली, हु इज फ्री? आई थिंक नहीं है कोई एवरीवन, free. नहीं कोई भी नहीं फ्री है, तो ओनली द जिडान का ऑप्शन वायबल है। जिडान है, एनरिके है। आई थिंक एनरिके विल बी अ बेटर शूटर देन जिडान। मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई मालूम है? क्योंकि मुझे कभी कभार ऐसा लगता ना, जिडान वाज एट रियल मैड्रिड जब रियल मैड्रिड बहुत अच्छा खेल रही थी, बहुत अच्छा, मतलब लाइक तभी रोनाल्डो वाज, क्या बोलते हैं उसको, वो कहाँ नहीं से गोल मारा था, हर जगह से गोल मारा था। एंड वो टीम में ऐसे इतने अच्छे अच्छे बंदे भी थे। तो आई थिंक दैट वाज द टाइम जिडान वाज देयर, एंड दैट्स व्हाई ही वॉन बैक टू बैक यूसीएल्स, बैक टू बैक ला लीगास एंड स्टफ लाइक दैट। बट चेल्सी का जो अभी सिचुएशन है ना, इट्स टोटली डिफरेंट। हाँ, टोटली डिफरेंट है सबीर भाई, बट देन आई थिंक इवन द टीम दैट यू हैव, वैसे तो देखो अगर बोलना चाहे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि व्हेन बार्सिलोना को, ये सॉरी, जब बायर्न म्यूनिख को Guardiola was managing, he had everything and still could not win चैंपियंस लीग। या ठीक है, नहीं so वो even एक if you चीज, have to हाँ, be, या you will have to get the best out of them, right? या राइट, वो तो बात सही है, ईगो वो आई मैनेज कैन करना, एग्री। बिकॉज यू हैव अ टीम ऑफ विनर्स, उनका ईगो भी मैनेज करना है, राइट, उनका ईगो भी मैनेज करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि भाई वो लोग जो है, दे आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ द हैंड, यू हैव टू कीप अ लीश ऑन एज वेल, एग्जैक्टली। तो सारी सारी आई चीजें थिंक देखनी है, सारी चीजें देखनी है। जिडान इज ए लीडर, जिडान इज ए लीडर, वो तो मैं उसके पास से ये नहीं करूंगा। बट देखो अभी देखो द टीम ऑफ विनर्स एंड द टीम ऑफ चेल्सी राइट नाउ, आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस। रियल मैड्रिड जिडान वाज अ डिफरेंट स्टोरी, बट चेल्सी एंड जिडान विल बी अ टोटली डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज आई डोंट थिंक सो यार चेल्सी के पास ऐसा कौन सा प्लेयर है अपार्ट फ्रॉम एंजो फर्नांडिस हु रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड कप, कि उसके पास ये मेंटालिटी है, उसके पास ये माइंडसेट है, आई कैन डू माय बेस्ट। आई थिंक इफ यू लुक एट द प्लेयर्स राइट नाउ, जैसे मैंने कल का मैच देखा उनका, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था यार कि वो कुछ कर सकते हैं इन द नेक्स्ट मैच, क्योंकि वो ऐसे वाइब्स दे रहे थे, वी आर हियर जस्ट फॉर पे डे, जो यूनाइटेड के वाइब्स थे लास्ट सीजन, वो टाइप में वाइब्स दे रहे थे मुझे। बट या लाइक इफ यू कैन टेक अ एग्जांपल, द राइट मैनेजर कैन डू वंडर्स विद द राइट टीम, तो हो सकता है कुछ भी। Alright. बिकॉज द Azan एटीट्यूड bhai ऑफ saying चेल्सी Casemiro is a प्लेयर्स, mad dog, but अपना है बिल्कुल। या ही इज अ मैड डॉग सॉरी भाई। सॉरी, अजान भाई का कमेंट ले रहा था मैं, नहीं अपना है। totally man, totally No no better better time to time to beat them, yeah totally, because अगर हम लोग नहीं हराएंगे ना, तो फिर वो वाला चीज हो जाएगा कि यार सब लोग आके मार के चले गए बट यूनाइटेड नहीं कर पाई। तो आई थिंक वी हैव ऑल द टूल्स इन द बैक टू बीट देम एट एनफील्ड यार, in my exactly, opinion they we will are have beating their them, yeah players back, because end में जाके गेम है, they will have their players back, but we will have to just wait and see. yeah And chalo, Casemiro can give party and each a CL trophy, and we'll have much more than them. That's a fact. true man, That's a fact. true. Sandeep by saying back-to-back losses, can other teams take advantage? I think they will recover, but after City, I don't think they are going to recover against City. Yeah, After City, I think they will go for a run. But you see what Arsenal is all about. There is no plan B. When they have an off day with plan A, there is no plan B. That's what I was saying before as well. They are looking good. They are looking good. But Partey was not there for the 90 minutes. He played 58, 59 minutes. And when Jorginho came in, they were absolutely nowhere. They were having possession. They were having, lot of the ball, but that's it. That's it. Yeah, even against United आप देखो तो we lost because of our own doing, ठीक है? Even Eric Ten Hag stressed on it, even Eric Ten Hag
सीधा बताया उसने कि हमारे मिस्टेक्स थे, दैट्स व्हाई दे बेट अस. एंड टू बी ऑनेस्ट देखो आर्सेनल लाइक यू टोल्ड दे डोंट हैव अ प्लान बी. अगर पार्टी नहीं खेलतेगा तो वाट लग जाएगी आर्सेनल की. और एक चीज है आर्सेनल की मैं देखा हूं, दे आर प्लेइंग एक्सेप्शनल, ठीक है, बट फॉर सम रीजन मैं देख रहा हूं कि लो ब्लॉक टीम्स के साथ में उनकी वाट लग जाती है कभी कभार, जो हमारे साथ भी होता था कभी कभार. एंड द वे सैंडेज जो वही प्लान किया था कल, उसने जो जो टीम बनाई थी भाई कल, जो फॉर्मेशन उसने लगाया था, ही वाज देयर टू मर्डर आर्सेनल. ही न्यू एग्जैक्टली कि कहां आर्सेनल की yeah, and मारनी है. he had runners in the midfield, tough या tackling midfielders. Dokore भी था, या Onana भी था, you know. भाई So he 5 had a मिडफील्डर clear को plan. खिलाया था भाई उसने, 5 मिडफील्डर Yeah, को खिलाया था. लुक एट द फॉर्मेशन भाई, ओह माय गॉड. टिपिकल टिपिकल शॉन डाइच. exactly. भाई चेल्सी नहीं ही भाई देखो, ओले ओले इज हैविंग अ फ्री टाइम. उसने पहले ही बोला था आफ्टर यूनाइटेड, यू नो, देयर इज नो बिगर टीम दैन यूनाइटेड फॉर हिम टू मैनेज. यू नो, सिंपल एज दैट. वो अपना आप चिल कर रहा है भाई लाइफ में. उसने सब कुछ अचीव कर लिया. ही एंड प्लेड फॉर हिज ड्रीम he won't go क्लब. to the direct हिज rivals. ड्रीम क्लब. He won't go to the direct rivals. You can talk about small teams in PL. He can go there, but direct rivals never. I like seriously. We know Ole like how much like itna we have seen him talk about United. You can't expect him to go to एग्जैक्टली. Chelsea, Arsenal, Liverpool, whatever. You can't expect him doing that. तो बॉयली पेड कैमरामैन लग तो ऐसा ही रहा था भाई. लग तो ऐसा ही रहा था कि मतलब प्रीमियर लीग का कैमरामैन नहीं, वो बॉयली का पर्सनल कैमरामैन हो. जिडान टू यूवेंटस, यस और नो मुसबिल भाई, व्हाट डू यू थिंक? I agree with that. I'd agree with that. तो फिर वहां से और पोगबा का पत्ता कट हो जाएगा. भगा देगा उसको. पॉग्बा को तो भगा देगा वैसे उसको. भाई रोहन भाई का एक कमेंट ले लूं. डू यू थिंक विल डू रीस जेम्स, फ्री रीस जेम्स चेल्सी? Yeah, man. Yeah, seriously. I love that guy. फ्री रीस He can do wonders at जेम्स. United. Yeah, we should run a campaign run करना चाहिए अपने को. Oh my बिल्कुल, god. फ्री रीस जेम्स. But Totally. we all, Totally. ये player, you know, he would make any team better. You know, Yeah, rival totally. है, ठीक है, he has been a Chelsea born and brought up, but he will make any team better on his day. Simple as that. I totally agree. Simple Yeah. as that. Yeah. So, शीन डैश बॉल भाई देखो, ये बंदा मुझे लगता है रेलीगेशन से बचा लेगा. और एवर्टन का स्क्वाड हाँ. नहीं है यार रेलीगेशन वाला. मैं हमेशा से बोलता रहा नहीं हूँ है. that they, the Premier League have at least 4-5 teams जिनका स्क्वाड इनसे बेकार है. ठीक है, Yeah. all they need is that mentality कि भाई they can grind out the wins. कल उनकी Totally. शुरुआत हुई है. आई एम नॉट सेइंग कि वो रन पे चले जाएंगे 10-11 गेम के, बट आई एम जस्ट सेइंग कि नाउ दैट दे हैव डीसेंट फिट, नाउ दैट दे हैव 2 or 3 other players in the mix as well, you know, I think they can just survive the drop. You know, I think they can just survive the drop. So चलो भाई, मैड्रिड वापस नहीं जाएगा. व्हाट डू यू थिंक? I don't think he will. I don't think. No. बिल्कुल मुझे भी नहीं लगता. फुटबॉल्स गोल्डन रूल, अरे भाई वो कहने की बात है. गोल्डन रूल, गोल्डन रूल तो ये भी है कि भाई अंधों जैसा डिसीजन नहीं दे सकते, बट दे रहे हैं ना. गोल्डन रूल That's important. सबसे बड़ा गोल्डन रूल तो वो है. है ना, कि आंख के ऊपर पट्टी बांध ले. भाई देखो, लिवरपूल as a fan we always get rattled in small decisions also, but जब कमेंटेटर बैठ के बोल रहा है ना कि ये रेफरी को चश्मे की जरूरत है, तभी you have to बिल्कुल get an idea कि यार क्या चल रहा है गेम में. बिल्कुल. चिरंजीव भाई वेलकम टू द स्ट्रीम. कोई चांस नहीं है रिड्यूस होने का. शायद बढ़ जाए अगर हम अपील करके हार जाए. सो यू नो, ये चीज हम नहीं करेंगे. हाउ गुड वाज डीसीएल इन एवर्टन? ही इज स्टिल देयर भाई. I can understand your banter. He's still there. He has not done that which was expected of him, but he's coming back from a long-term injury as well. So we will see how that goes. मैं पूरी फैमिली चेल्सी फैंस है ना. रीस जेम्स की बहन ने यहाँ पे शुरू किया. Lauren but James, I think, right? हाँ, she wanted to go to, yeah, she wanted to go back. So yeah. भाई का कमेंट मिस हो जाए तो वापस डाल देना. निविन भाई, आई नो ही इज फ्री. एनरिके, मैंने नाम लिया है उसका, बट ही इज लिंक्ड विद एथलेटिको, you know, and I think if he is given the option between Atletico and Chelsea, and I think at this point of time he will take Atletico. Yeah, totally. No one wants to, put dirt on your hand with Chelsea right now. And I think
La Liga is better सॉरी suited. सॉरी, एक मिनट, Yeah, yeah. हाँ एक मिनट, La Liga अरे is संकेत better भाई मैं suited आई to Enrique. ऑलरेडी, हाँ मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि यार वो अपने हिसाब से फिर बना भी सकते हैं ना, उतना प्रेशर नहीं होगा हाई प्रोफाइल, यू नो, ही कैन टेक हिज टाइम. संकेत भाई, I already answered. For me, it's a no. I don't think Zidane will move back to Real Madrid. I think he will go to क्या बोलते हैं उसको, या तो Juventus. Chelsea might be an option जहां पे भाई all of a sudden you get everything that he needs. घर बंगला गाड़ी जो बोलते हैं ना, सब लाके उसके कदमों में डाल दो. Then he might accept. He is still looking for the French national job, but वहां पे थोड़ा सा राड़ा पड़ गया है, So I don't see that happening either. So for me, it's Juventus. For me, it's Juventus. So भाई सारे एंगल देख चुके हैं निविन भाई. That's what I'm saying. That was not a red. मतलब कॉलर पकड़ने का रेड है, बट इंटेंट वाइज दैट्स नॉट अ रेड. आयु ने थप्पड़ मार दिया भाई फ्रेड को. दैट वाज अ रेड. That was a red. भाई स्निधि भाई, I think everyone would love to see that. Yeah, true. I think Everton should win that game because it's the क्या बोलते हैं उसको, डार्बी होती है ना उनकी, तो they should this is the right time. This is the right time. I think Dice can do the job. Dice can do the job against Liverpool. He can do the job. I think even if you don't win, don't lose. Exactly. Just keep them where they are right now. Exactly. कि मतलब हारो नहीं उनसे. हारोगे तो भाई, अगर इतने बुरे टाइम में उनसे अगर तुम हार रहे हो ना, so that would give them a lot of confidence. Exactly, and that's what I don't want. Exactly. Obviously भाई midfield में depth नहीं है, but we will have to hope that our players can do the job जो कि available है. We will also have to make sure that their game time is managed because back to back games हैं, so वो भी देखना है. बारसास फार्मास और भाई ये उनसे प्लेयर लेते हैं और भाई वो ला लीगा जीत जाते हैं. They took Villa, they won ला लीगा. उसके बाद उन्होंने फिर वो लिया, क्या नाम है यार वो दूसरा बंदा भी, सुआरेज लिया, फिर ला लीगा जीत गए. अब मेम्फिस लिया. यू नेवर नो, अभी वो नहीं जीतेंगे इस साल, बट यू नेवर नो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाए. मुसब्बिर भाई, इस पे क्या थॉट्स हैं? व्हाट्स रॉन्ग विद पॉटर? फॉर जी भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक डू यू थिंक जो प्लेयर्स अभी चेल्सी में आए पॉटर की मर्जी से है? पॉटर का शॉर्टलिस्ट था वो इतने प्लेयर्स? आई थिंक द सेम थिंग इज हैपनिंग विद, the same thing is happening what जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ में जो होता था ना. I think the same thing is happening with Potter right now. I think he wants a different kind of profile players because मुझे नहीं लगता कि ये जो उसने प्लेयर्स लिए हैं अभी उसको वो चाहते हैं, क्योंकि वो ब्रिटन में देखो उसके जो प्लेयर्स हैं वो एक अलग प्रोफाइल के प्लेयर्स हैं, एक अलग सेटअप में खेलने वाले प्लेयर्स हैं. बट जो अभी चेल्सी में जो प्लेयर्स उसने लाया है टोटली डिफरेंट यार. मतलब दिस इज द थिंग रॉन्ग विद पॉटर राइट नाउ फॉर जीवा, कि उसको उसके हिसाब से प्लेयर्स नहीं मिल रहे, उसके हिसाब से प्लेयर्स आर नॉट परफॉर्मिंग, एंड जो कोर टीम है चेल्सी की कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रही. तो लाइक मजा आएगा देखने के लिए लास्ट नेक्स्ट 3-4 मैचेस वो क्या करते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड होगा कि यार पॉटर को रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए. मैं तो बोल रहा हूँ अगर नेक्स्ट 3-4 मैचेस में अगर वो रिजल्ट्स नहीं निकालते ना, पॉटर तो वॉलंटरली लाइक ये दे देगा अपना. पॉटर का जो क्लॉज है ना, उसके हिसाब से अगर वो अभी उसको सैक करते हैं तो उसके पूरी टीम को कंपनसेशन देना पड़ेगा. इफ पॉटर इज नॉट गेटिंग अ टॉप 4, तभी तो देखो द रीजन दे हैव डन दिस मैड बिजनेस कि अगर टॉप 4 आ गया तो ठीक है. टॉप 4 अगर नहीं आया, दे कैन लेट गो ऑफ हिम फॉर फ्री. द मैनेजर गोज आउट, नया मैनेजर लेके आएंगे, कोई कॉम्पनसेशन नहीं देना पड़ेगा, एंड दे विल हैव अ ब्रांड न्यू टीम. और सेल तो उन्होंने करना ही है फिर समर में, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा. So that's what they are thinking. Sandeep is saying Chelsea is preparing a team of Phil Jones. Amit bhai is saying, what would you take given one Casemiro red card? Obviously Casemiro red card. Liverpool से हार थोड़ी है भाई, not even a question. So Sandeep bhai, this question should be laughed at. Yeah, totally. I won't favor that decision, not at all. Chiesa is not a world beater भाई. Chiesa is a good player. Chiesa is not a world beater. Chiesa is a right winger. हमारे पास already दो in the pipeline है.
Exactly, and you see Anthony. Just give him few more matches. He will be, he's showing what he's made of. थोड़ा game by game. वो मैनेजर ने भी बोल रखा है भाई, द वे ही सेट अप टू प्ले, जो जिस तरीके से मैंने उसको बोला है वो वैसा खेलता है, तो भाई हम खेलता मैनेजर को है. क्या क्वेश्चन करेंगे? उसका काम है Exactly. विथ मेंटेन करना, वो करता है. Exactly. And सीधा उसने बताया कि यार उसका प्रोफाइल ही अलग है. You can't expect him crossing in the box. हाँ, He won't. He will just hold the ball. He will let the players come in. He will give it to someone else. Then, different kind of player. हर विंगर का यही काम नहीं होता कि वो बस क्रॉसेस डालते रहे. No. एग्जैक्टली. ओसिमन इज अ यूनाइटेड फैन बॉय. मुझे शायद जो एक बारी मैंने सुना था, ही इज, he comes from Nigeria, तो वहां पे यूनाइटेड का और आर्सेनल का फैन बेस इज ह्यूज. So I won't be surprised. I cannot say that for sure that he is, but I won't be surprised if he is a United fan boy, because Africa में it's either United, either Arsenal. Exactly. थोड़ा बहुत Chelsea in the recent years थोड़ा they बहुत, have made थोड़ा बहुत, but it's always Arsenal and United in African continent. So we will see how that goes. Ashley, welcome to the stream. Thanks a lot for joining in. भाई उसने असॉल्ट थोड़ी किया भाई, कैसी बातें कर रहे हो? असॉल्ट आयु ने किया है, कैसेमीरो ने नहीं. that's what I'm saying. असॉल्ट आयु ने किया है, कैसेमीरो ने नहीं. So कैसे हम बोल सकते हैं कि भाई दैट्स एन असॉल्ट, जब कोई इंटेंट ही नहीं है? बिना इंटेंट के कौन सा असॉल्ट? असॉल्ट अगर कैसेमीरो करता तो फील ह्यूज बचता थोड़ी भाई, उसको तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता स्ट्रेचर में. You should see Casemiro doing assault on Barcelona players. Just watch the El Clasico matches. पुराने. That's called assault. This is just shoving. This is not even shoving, मेरे भाई. हाँ. उसका टैकल थी, उसको गला पकड़ने की जरूरत थोड़ी है. हाँ भाई. अगर भाई उसको रेड कार्ड ही लेना था तो वो पिच पे 2 फुट टैकल करके जहां पे एक प्लेयर को भी ले जाए और खुद रेड कार्ड ले ले, वो अलग की चीज है. For some reason, he is behaving himself at United. For some reason, he's very seriously. अच्छा बच्चे के जैसा वो हाँ सही में. He admitted it. Even he admitted कि I'm not enjoying at United, and for some reason छोटा अच्छा बच्चा है, उसका दिमाग अगर कोई ट्रिगर कर दिया ना भाई, तो आप बस देखना कि वो उसका गेम क्या है और वो रियली कितना बड़ा मॉन्स्टर है. Exactly. Against Leeds, yeah, I expect 9, but I would be happy with 7. Not less than 7. I expect 9. I expect 9, man. I expect 9, and I would be happy if you get 9, because देखो, these are the games when we should pull out everything. ठीक है, कैसेमीरो नहीं है, I understand, but I think we have the team जो रिजल्ट निकाल सकती है. Just feed into Rashford, Exactly. just feed into Anthony, just feed into I think we whatever players we have right now, just feed करो. Even Bruno can is in good form, who can score from the midfield. तो I think just we need to क्या बोलते हैं, हमारे बेसिक्स राइट करना है बस अपने को. बस we have to be on our basics, तो हम लोग निकाल सकते हैं रिजल्ट. I'm not expecting less than 9 in these 3 games. Exactly. That's what I'm expecting as well, but let's see how that goes. Right back, we should look at Frimpong. 100% Frimpong. Totally. And ये एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया है श्रीनिधि भाई ने. FIFA changing rules regarding players contract, they made max 5 years. Yeah, वो मतलब लाइक ये मुड्रिक का सीन है ना, इसलिए मुड्रिक के सीन के बाद से they thought that was the right, Yeah, because सबको पता है कि जब उस तरीके से that was a loophole and they took advantage of the loophole. Exactly. So ये चीज नहीं होनी चाहिए, और ये चीज आगे शायद अब ना हो, but let's see how that goes. भाई कितने पॉइंट्स हुए मेरे FPL में भाई मेरे पॉइंट्स हैं अभी 1264. Ashley, thanks a lot for making this point. This is really good one. I don't know. We have already talked about Savitzer. We started the stream with Savitzer. Yeah. Winning mentality. Obviously, he comes from Bayern Munich. He went over there just because he wanted to win, and he will be with us permanently. Whether he is going to be with us or not, that's to be seen. That's to be seen. But overall, what we are expecting from Savitzer is the passion. That even if you are here for 6 months, give your best.
give your absolute best, and that's what we expect. If Modric does well as Chelsea, he will go on to become a club legend. Otherwise, why too early to say यार, अभी तो उसको आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ. So Yeah, he is a decent Modric, player. He is a decent player. इतना and कुछ even खराब Modric नहीं है. about it that we have overpaid. Yeah. टाइम लगेगा उसको सेटल अप होने के लिए, बट यार चेल्सी एक ऐसा टीम है यार, वो कॉन्ट्रैक्ट तो दे देता है, बट 2-3 सीजन के बाद वो फिर तुमको याद सड़ाएगा, नहीं तो फिर बाहर फेंक देगा. Was I happy with the performance? I was absolutely static with the performance. Totally dominated the game. Totally. Totally dominated the game. They had nothing to do till the time Casemiro went off. Yeah. They had absolutely nothing to do in the game till Casemiro went off. And I think, absolutely like I said, dominating. वो goal भी, it was a fluke. The goal was very fluke. In a heat of the moment में वो मतलब कैसे भी चला गया अंदर. But still, I think we did massive, yeah. In terms of defense, in terms of midfield, throwing passes, in terms of our quality up front, also we have done enough to win that match. And that's why I'm expecting कि हम लोग future के games में भी अच्छा करें. That's why I'm expecting better from United कि हम लोग next 3 matches में 9 points निकाल लें. Exactly. मतलब ये कॉन्फिडेंस बहुत टाइम बाद आया यूनाइटेड फैंस के पास, where they are talking about कि हम जीत सकते हैं. संकेत भाई, इस गेम वीक में मेरा भी गेम वीक खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज दिस इज अ डबल गेम वीक, तो यूनाइटेड का भी एक गेम और रहता है, तो अभी डबल गेम वीक में मेरा ऑलरेडी 63 है. आई हैव हालैंड लेफ्ट और आई हैव एडरसन लेफ्ट, सो देखते हैं व्हाट दे डू. वी विल सी व्हाट दे डू टुडे. सभी भाई, one thing that we need to be worried about Leeds. I know अभी थोड़ा सा टाइम है लीड्स गेम आने में. I think we have 2 more days. हमारा शायद ट्यूसडे नाइट है या वेडनेसडे नाइट है. That needs to be seen. I think वेडनेसडे नाइट में होगा most probably. मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ना. 138 को आज है 5th या वेडनेसडे लेट नाइट किक ऑफ है. लेट नाइट किक ऑफ है. 1:30 for us, 12 o'clock for you. Yeah, 12 o'clock for me. यार ये बार-बार ऐसे क्यों कर रहे हैं यार? 1:30 का इंडियन टाइम में किक ऑफ है. It's very difficult sometimes. I think उसके पहले तो किसी का गेम भी नहीं है. अभी like it's been 3 weeks. 3 weeks we have been seeing this late night kickoffs. Yeah. और ये हो चुका है ना एक तरीके से. ये 8:30 वाले गेम्स भी barely get. 8:30 वाले गेम्स भी barely get. वो तो पिछला वाला आ गया, और शायद हमारा जो दूसरा वाला जो लीड्स गेम है, that's on a very good time. That's 7:30 my time. That's on 12. Yeah. That's on Sunday. That's on a very good time. Ashley says, sure, we are not the same without Casemiro, but I trust Ten Hag. De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Shaw, Savitzer, Fred, Anthony, Fernandes, Rashford, Weghorst. I will go with in this game. I will go with Sancho. Give him 45-60 minutes. What do you think, Musafir bhai? Totally. Because मैंने जो सैंचो का देखा लास्ट गेम में, मुझे लगा he was brilliant off the ball and on the ball also. He's like, I hope कि थोड़ा सा उसको गेम टाइम मिले and start to grow in his game. So he can play in the next game, यार. He can play in the next game. Because Sancho is a confidence player, and against a team which does not, which is not looking to sit back. That's where Sancho can go out, showcase his talent a bit more. Exactly, yeah. Because वहाँ पे उसको space मिलेगा थोड़ा, वहाँ पे he can run with the ball, so I think that would suit him very, very nicely. Exactly. Do you think Bruno should change his penalty taking technique? नहीं भाई. He does he knows. He feels. Yeah, he knows better. He knows better exactly what he needs to do. So even if we say anything about it, even we have opinions about it, he will do what he wants, and he doesn't need to change anything. He just needs to do his basics right, and that's what he's doing. With yesterday's penalty, he did what before he used to do. So I don't see any problem with that. Exactly. And by the way, a brilliant fact at least I didn't know about it कि Manchester United have won their last 13 home games in all competition. Like इससे पहले 2011, I think 2010 में ऐसा हुआ था, 2011 में ऐसा हुआ था कुछ, वो 2 सीजन्स में ऐसा हुआ था. 2010-11.
10-11, yeah, right, 10-11 में हुआ था. That's massive. रिजल्ट निकल के आ रहे हैं यार. आई थिंक जब ऐसे रिजल्ट निकल के आते हैं ना, हमारे जैसे फैंस हो या फिर कोई भी फैंस हो यार, उनको मतलब लाइक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है. फिर तो वो कोई भी सामने हो, जैसे अभी हम लोग बैठे बैठे बोल रहे हैं यार, बार्सिलोना क्या है यार, निकाल लेंगे, मैच निकाल लेंगे, या फिर गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, वट एवर इट इज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. लाइक हम लोग ऐसे टोन में बात कर रहे हैं जैसे हम लोग निकाल लेंगे गेम. इवन निकाल नहीं लेंगे तो गेम, Yeah, हमारा even गेम अच्छा रहेगा. वी विल परफॉर्म ऐसा टाइप में. exactly. मैं वही चीज बोलता हूँ. You are not going to win all the games that you play. It's Exactly. never gonna be like that where you go out and you play all the games and you win all the games. But there won't be any Brentford again. There won't be any Brighton again. Where you City. just go out and you just Yeah, just give it up. There we are not totally. even in the game. Totally. Deadshot is here, and he says before it cut we were playing brilliant football, 100%. Totally. 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 We given them, we didn't allow them anything. That was one shot on target from them. That was from outside the box by Schlupp. Yeah. That was more Yeah. Yeah. frustration than. Yeah. Ashley said the kind of love that Sancho received from the fans when he came back to the pitch will definitely boost him. Totally, That's why man. that Totally. I was talking about. And That he actually, is. उसने, I think he has changed his Instagram or Twitter account with that Eric Ten Hag का DP लगा के. Have you seen that post? He has put up a वो picture of ट्विटर him पे and किया Eric है Ten शायद. Hag. वो ट्विटर Yeah, पे yeah, किया है yeah. शायद. Twitter पे किया है. Which is हाँ. really good to see. Which is really good to see. That's what confidence does. When you know that the manager backs you and the manager Yeah. fancies you, that okay, he is back now and he is going to give us what we absolutely missed and what we absolutely love from this guy, and that is the goals, that is the assists, that is the Totally. performances. So that's what the manager expect, and I think that's what even United fans at this point of time, जिनका एजेंडा है भाई उसका कुछ नहीं हो सकता. हाँ, वो एजेंडे तो वाले का कुछ नहीं हो सकता, वो हमेशा चलते रहता है. I'm just saying at this point of time that he will be ready. He looks ready. He looks ready and he is like, all right. I have missed out on the games. Now it's time to just go out over there and just make sure that okay, we are going to just perform. And he knows with the arrival of Anthony, it's not gonna be like he will be playing all the games. At exactly. times Anthony will play, at times Sancho will play, at times he might be utilized on the left hand side. We Yeah, might maybe. see Anthony Sancho left, Rashford as a striker, in Yeah. certain games, and that will Yeah. work. That will work absolutely Totally. fine. Totally. He needs to understand that, and at the same point of time, as I said, he needs to perform. This is my feeling, because the potential is absolutely next level for him. So we will see how that goes. And Musafir bhai, I got your text. मैंने reply कर दिया था. अच्छा. So हाँ, उससे मैंने reply कर दिया था. अब नहीं हो रहा तो चलो कोई बात नहीं. Try someday else. I need to. I think मेरे ख्याल से ना I'll make another profile, क्योंकि मुझे भी ना like when I have to do something like that, ये profile से मुझे किसी को follow करना होता है, तो I think which is not good. I have to एक नया सा profile खोल के मेरे नाम से, if I do that better, because I saw कि आप वो strategy use करते हो, which is very good. जो आप like आपका भी I think 2 Gmail account है, which one is Anshuman Singh and एक तो channel वाला. हाँ, मैंने क्या किया, मेरा ये personally ऐसे रखा, मतलब इससे मैं किसी को फॉलो करना है फॉलो कर रहा हूँ, इससे मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो आई थिंक विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट वायबल ऑप्शन. आई विल ओपन अ न्यू वन, सो इट विल बी बेटर. चैनल वाला रहता है तो वो ज्यादा बेटर रहता है. या कोई चैनल का नाम भी दिख रहा होता है ना वहाँ पे कि भाई साहब चलो, if I am commenting. So we are back at our best, definitely for G-Boy. We are back at our best. 90% or 80% I would say is we are still a bit away from where we want to, because we don't have the players yet. Once we get our CM, once we get that striker, and then see what the manager is capable of. That's what I want to say. Second goal was totally Ten Hag ball. Oh, totally, man. Beautiful, यार. क्या goal था. The way they created everything. And to be honest, यार, we have a good lad at prospect बोल सकते हैं यार. One of the best exciting players I have seen after so many days. Like ग्रीनवुड एक ऐसा प्लेयर था, बट यार अपने हाथ पे हथौड़ा मार के उसने पूरा करियर बर्बाद कर लिया. बट उसके बाद we have created someone like that. Seriously, I adore that. I adore him. And that pass by Shaw
Yeah, exactly. Ticking everything. Yeah, Garnacho takes the ball, goes in the midfield, and suddenly passes to the Shaw. And Shaw का pinpoint cross. Rashford is just बिल्कुल standing. pinpoint. He's standing हाँ, there. उसके पैर पे उसको बस डिफ्लेक्ट करना है, that's what he did. Bas. Exactly. मतलब उसको Seriously. ये था कि बस यहाँ पे टच करो and the ball goes in. That's it. Exactly. And he knew कि कहाँ पे मुझे टच करना है. कहाँ पे मुझे टच करना है बस. It was not directed towards anyone. It was just beautifully placed. I think शॉ के Exactly. वो पास में इतना ज्यादा This स्टिंग is था, कोई भी कर देता यार. शॉ के पास में बहुत ज्यादा स्टिंग था. That was a beautiful pass by Shaw, yeah. Seriously. and अगर वहां पे लुकाकू होता ना, he would have given it for a corner kick. Oh sorry, a goal kick. वो जब तक अपना पैर घुमाता, उसका फर्स्ट टच लगता और बॉल चले जाते कीपर के पीछे. उसका उसका क्या है मालूम है? आई थिंक ही स्टिल थिंक्स कि यार मैं इस पे लेफ्ट लगाऊं, मेरा राइट लगाऊं. उसमें टाइम No, निकल जाता है no. उसका. The problem with Lukaku in the past is he thinks in the category of Benzema, or he's in the category of, again with Lewandowski, with Aguero. He thinks that's where he belongs, and he doesn't belong over there. No, He doesn't belong over there. no, You're I think देखो वो वाली बात होती है ना. देखो, you belong there when you put in the hard work, you put in that mindset कि यार मुझे करना है कुछ. बट लुकाको का ऐसा लगता है ना कि वो, हाँ, मैं अच्छा हूँ, बस वो बोलता है बट करके दिखाता नहीं है. That's the problem with Lukaku. exactly. And he was a good striker. I'm again phrasing, was a good striker at United also. First season was commendable. बहुत अच्छे goals निकाले उसने. Especially that Southampton game जिसमें उसने brace मारा था यार. I still remember. Out of nowhere उसने वो goals निकाले थे. But again, you have to He keep had his on doing moments in that. United. Yeah, he has his moments in He United. had Yeah, his true. moments. He had his moments, True. but वही वाली बात है ना, that needs to be consistent if you are 80 million, 75 million player. Exactly. Yeah. He didn't work towards It's it. He not your didn't work fault that towards we it. are saying. Yeah. Yeah. He got fat, then he started leaking the training data, and all that. Everything went haywire. So I can use the word magician transforming Man United with staff. भाई मैं तो the moment Eric Ten Hag was in picture, I was like, no Pochettino, no Conte. When I said no Conte, people jumped on me. Oh, you don't want a serial winner. Oh, he has won this, he has won that. But Falana Dhimka. I was never in for Conte. Before also मैं कभी भी मैं Conte के इसमें नहीं था. I knew he was a good manager, but still Conte was never in the picture. Poch was still okay, but I was so like there were no option for us kind of, because Eric Ten Hag was not in the ratio तभी. Eric Ten Hag की बातें नहीं हो रही थी, तो I was okay with the Poch. But जब Eric Ten Hag आया, then when I saw his profile and stuff like that, and I know कि यार Ajax में he has done massively. Then I was like, yeah, something's gonna change at United. But I was not expecting कि इतने जल्दी इतने सब changes आ जाएंगे. And I was not expecting कि यार वो किसी मतलब जैसे contracts उसने renew नहीं किए of Pogba, Lingard, whatever it was, and उसके बाद रोनाल्डो के साथ में वो situation. I was like, whatever the results may be, but I want this manager to be there. And I knew there will be changes here. The thing is, we make fun of Glazers, the board. I will always do that. I absolutely despise them. But they were very, very quick in terms of getting Eric Ten Hag to the club, I think, yeah. and they were very, very quick in listening to him. No Exactly, contract yes. for Pogba, no contract for David De Gea. So these guys, they were, if not for Eric Ten Hag, their contracts would have been renewed by now. Exactly. Yeah. Pogba would have given a massive pay rise. You never know. But he saw the team and he was like, all right, those who want to go, they can go. This is how I want to run things. Totally. This is how I want to run things. So Redshot says that, all right, Pale Hashley, we will take his comment. With a manager like ETS, the youth will come knocking at the door. See, that's what I'm saying. And then, see, one hypocrisy which I don't understand at times is like, when Donny wasn't getting the game time, people said, oh, he must not be doing things in training. Yeah. And that's why the managers are not fancying him. Same fan base is like, oh, Pelestri should be given a chance. How dare you cannot play Pelestri? That's an agenda. And then I just say he must not be doing the same things that the manager wanted in the training. Exactly. And then he's like, no, it's totally different. I'm like, how it's different? Just tell me how it's different from Donny's situation. He is young. Donny is still 24, 25. Pelestri is just 19. Yeah. And he is not talking about it. He knows that he needs to earn. And plus, he needs to
get that position from the likes of Sancho and Anthony. And that's why he said it's not going to happen for him at this club at this point of time. So if he goes out, get him a release clause, a buyback clause if you can. But at this point of time, Ahmad as well as someone like Pelistri, they are not going to take care of Anthony as well as Sancho. That's my take on this. What do you think, Musafir bhai? अटक रहे हो मुसाफिर भाई, अटक रहे हो. Guys, he will be back. वो थोड़ा सा अटक जाने वाली प्रॉब्लम हो जाती है. The thing is now we don't stick to one side. Absolutely, भाई. यही होता है ना when you have plan A, plan B, even plan C during the game. Game change होने तक नहीं during the game. Anushka, we hope we don't suffer. I hope we don't suffer. That's what I can say at this point of time. See, actually, that's the thing. You know, when you have a manager who's got so much self-belief, the next thing he needs is the support from the board. You know, so first thing, he was appointed. Second thing, he needs the support from the board. So the membership was gifted by Venkatesh bhai. So you can thank Venkatesh bhai. So इनको thanks बोल दो भाई. I will, I have tagged him. So he gifted the membership to everybody. जो आज 11 membership है, 10 from him, 1 from Jehan bhai. So yeah, that's what I am saying. A loan move sounds the best for him at this point of time. He can definitely go out and showcase his talent with Eredivisie or Bundesliga teams. Eredivisie. I love him at Eredivisie because his gameplay is like that. And I think जो point रखा आपने Sancho and Anthony का, it is like seriously, even Ahmad on good form is very difficult to get in this team, because if you look at Anthony's profile and Sancho's profile, you can't compare every player with them, right? So it is very difficult. And the people talk about Pelistri like I don't know why यार. So for some reason some people थोड़ा सा एजेंडा ही लेके बैठते हैं वो डॉनी के साथ में हो या फिर Pelistri के साथ में या किसी भी प्लेयर के साथ में यार. The manager knows best. He knows exactly what he is doing, and you just have to trust him. Because देखो सीजन के स्टार्ट में you were like यार क्या होगा, क्या बोलते हैं, खराब सीजन से हम लोग उभर के आ रहे थे एंड स्टार्ट में 2-3 मैचेस हम लोग इतने गंदे खेले, तो उसके बाद यू वर ओके विद एटलीस्ट एक ड्रॉ निकाल ले, एटलीस्ट एक स्क्रैपी विन निकाले. बट जब टीम इतने अच्छे रिजल्ट्स लाके दे रही है, यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर फ्रॉम द मैनेजर, व्हिच इज नॉट राइट. ही नोज एग्जैक्टली व्हाट इज डूइंग, and he will keep on doing what he knows best. Exactly, right? Exactly. You can have your opinions. Team नहीं है, people forget that. Yeah. People forget that very easily कि अभी उसकी अपनी खुद की 100% टीम नहीं बनाई है. He is still 3-4 players from making his team his own. Exactly. You will see a real Erik ten Hag in the next season. Exactly. If he is back in the summer. The last 8 years said it has come to an end. No one is laughing now. Absolutely. True. I still remember this. Yeah, because I was on a stream with a friend, a very good friend of mine. We have banter a lot of times, and उस stream पे बहुत लोग थे, type of odd content creators, and that time they told like, yeah, not even played single match, but this statement of eras count to an end was too, क्या बोलते हैं इसको, drastic statement था, बहुत बड़ा statement था. But I think they are not laughing anymore because they are on 9th and 10th जो भी ये बात बोले थे. And if your guys are watching this, I'm just I think 4-5 months पहले की बात है, हम लोग स्ट्रीम कर रहे थे, और ये वो चेल्सी वाला बंदा था और वो लिवरपूल वाला भी बंदा था जो हंसे थे. And I was like, you won't be laughing at the end of the season, and you can clearly see what happened, right? Exactly. Do United win? Would no. In simple words. After what he did, no. But yeah, we will love to have him. But after what he did, I think there is no chance of him coming back in this team. There is no way. No. With Erik ten Hag at the helm, I don't see it happening. As I said, if the team and the manager wants him back, that's their decision. I'm not going to support the player. I have said it clearly. Not every decision that the club takes or the manager takes, I support it.
So that would be one of those decisions. I am not gonna support it, not the player, not the decision. And in my humble opinion, I don't see a way through for him with Eric Ten Hag at the helm. If it was Ole, we might have seen him. But Because I think the thing is, अभी जैसे मेंडी का सिचुएशन ले लो आप, whatever it is, ग्रीनवुड का सिचुएशन इज काइंड ऑफ डिफरेंट, यस वी नो, बट स्टिल whatever happened, जो चीज हुआ नहीं हुआ वो तो वी डोंट नो, बट जो भी इंडिकेट करता है वी नो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम. सो आई डोंट थिंक सो कि यूनाइटेड को रखना चाहिए ग्रीनवुड को. अगर रखते भी हैं तो लाइक भैया ने बताया कि इट्स ऑल अप टू द क्लब एंड द मैनेजर what they see fit for themselves and fit for the team. But I think उससे थोड़ा सा तो इमेज टार्निश होगी मैन यूनाइटेड की, क्योंकि यार कभी आई थिंक क्योंकि कभी कभार ऐसी चीजें हो जाती है ना, ऐसी चीजें हो जाती है तो people hold on to that things. Look at the see, people are saying oh what happened to proven guilty. भाई जब सामने चीजें दिख जाती है ना तो हर चीज ऐसा नहीं है. We have seen lot of people getting away because they have money. Exactly. मेंडी के 6 रेप चार्जेस जो है वो एक रात में गायब हो गए. अब बोल दो मेंडी इज इनोसेंट, अब बोल दो मेंडी इज इनोसेंट, अब उस पे क्या बोल सकता है इंसान? नहीं बोल सकता ना. अब एक रात में 6 रेप चार्जेस गायब हो जाए, बोल दो मेंडी इज इनोसेंट. या सी मैं एक ही शॉर्ट बात ही बोलूंगा मैं कि देखो, इट्स अप टू द क्लब इफ दे वांट टू कीप ग्रीनवुड और नॉट. इफ दे आर कीपिंग हिम, got no problem with it, but I won't support him in a way I would before. मैं ग्रीनवुड का बहुत बड़ा, I used to love that guy. I used to love that guy seriously. But वो जो हुआ, even if he's innocent यार, even if he's innocent I don't mind, but still I won't support whatever happens in future. But I think the best way is letting him go. The best way is letting him go. That's my opinion. Because now you have a team which is doing so good, and United runs on PR. Exactly. And he's a bad PR. Yeah. United is a global fan base. जिसको चाहिए भाई, मैं उसको ये नहीं बोल रहा कि how dare you कि तुम्हें वो चाहिए भाई, वो तुम्हारा opinion है भाई, तुम उसको रखो, फेंको, जो करो, if you want him, if you want to, इसको जो भी है. The reason United was paying, people बोलते हैं ना कि भाई अगर इसको फेंकना होता तो फेंक दिया होता. अरे नहीं फेंक सकते थे भाई. The case was in the court. तब तक तुम उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते. Now they are already looking at the legal options, how to go forward. Yes. With this is out of the way. अब वो यूनाइटेड के ऊपर है भाई कि यूनाइटेड को क्या करना है. Exactly. And there are reports coming in. लोग बोलेंगे अरे false reports है. उसी रिपोर्ट, और वही अगर अभी ग्रीनवुड के फेवर में डाल देंगे रिपोर्ट्स तो बोलेंगे अरे भाई देखो क्या रिपोर्ट आई है. Players are not in the favor of having Greenwood. जो लोग यहाँ पे कुछ लोग आए थे, मुसब्बिर भाई, in the previous stream which I did about Greenwood, and they were like, oh, Sancho is still following him, ये उसको फॉलो कर रहा है. मैंने सामने दिखा दिया, मैंने बोला भाई देख लो, कोई किसी को फॉलो नहीं कर रहा. लिवरपूल के, एवर्टन के प्लेयर्स फॉलो कर रखे हैं रैशफोर्ड ने, बट ही इज नॉट फॉलोइंग ग्रीनवुड. तो वही वाली बात है, क्लब रखता है ठीक है, क्लब फेंकता है ठीक है, अगर रखता है आई एम नॉट गोना सपोर्ट इट. दैट्स माय थिंग. एंड एज आई सेड, contract should be just जो भी है उसका, because you have so many big brands that you are with. और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ men's brand है भाई, now you have a women's team as well. Exactly. Yeah. So Anush bhai is saying United should release Maguire. भाई 80 million के player को you want us to release? No. Anush bhai, I think he will stay at United. I know he will stay at United. अगर Eric Ten Hag, because Eric Ten Hag has told about it कि I want a player like Harry Maguire at the helm, because he knows in few matches he has he has that physical presence. He can, अभी भी उसके पास इतना दम है कि वो कुछ कर सकता है. ठीक है, डिफेंडिंग वाइज इतना कुछ खास नहीं है, बट अब वे बोल सकते हो आप कि यार 80 मिलियन के प्लेयर को आप डायरेक्टली रिलीज नहीं कर सकते. एटलीस्ट 20 to 25 मिलियन कोई भी टीम देके उसको ले सकती है. तो यू कैन जस्ट थ्रो अवे अ प्लेयर. Exactly. That's the thing. See, Anush bhai, as a leader, yes, he has failed. As a leader, but he has इतना failed. इतना भी खराब नहीं है जितना उसको लोग बताते हैं यार. इतना भी खराब नहीं है. हाँ भाई 80 मिलियन का प्राइस टैग है उसके ऊपर, because we paid यार. People fail to understand that we are the ones who paid 80 million. अब कल को जाके, ठीक है, कल को जाके पार्टी के लिए 100 मिलियन दे दोगे तो 100 मिलियन का थोड़ी बन जाएगा, रहेगा तो नल्ला ही.
वही है ना, अब कल को जाके तुम एनकेटिया के 100 मिलियन दे दो और एक्सपेक्ट करो कि भाई वो हालैंड जैसा आके 50 गोल मार दे सीजन में, इट्स नॉट गोना हैपन. You were the ones who were desperate. You went Exactly. out, you shelled out 80 million, you got Maguire. You know, he is not Even a leader. even the And he case did of very well Anthony. in the first 2 seasons. Yeah, Yeah, he did very well in the first 2 seasons. He was in the top 3 center backs. exactly. And we lost that Then he got, we lost that final. We lost that final to Villarreal just because Harry Maguire was not playing. Because अगर उसके yeah, पहले के matches देखो, he was doing massive, भाई. Seriously. exactly. He was massive. Yeah, People forget it. ठीक है भाई, he's not a good captain, everyone knows. You know, but at the same point of time, he is not that bad of a defender कि भाई तुम उसको रिलीज कर दो. साला exactly. हमसे फिलजोस तो रिलीज हुआ नहीं यार, 10 साल से बैठ के खा रहा फालतू के पैसे. हमसे I think फिलजोस रिलीज. I read about Ten Hag commenting on Phil Jones. Is it right? Is it true? नो, मैंने देखा तो नहीं है भाई. आई एम नॉट सीन और हर्ड. It's like that's why I didn't share anything or I didn't say anything about it. But I मैंने heard नहीं a quote देखा. saying that, like he has no idea about Phil Jones because he's not coming to training and stuff like that. नहीं देखा तो नहीं है भाई. अच्छा. Marlene, welcome to the stream. And by actually, देखो, the thing is whether he lifts the trophy or not, club captain वही है. Just because he's lifting the trophy doesn't undermine Bruno's contribution. That doesn't overmine the contribution of Maguire. He should leave. I totally agree. I don't see him having the next season at United, but get a backup first. कि भाई तुम जाने दे रहे हो, उसके बाद तुम्हारे बैकअप के नाम पे कुछ है ही नहीं. And as Musabbir bhai say, he's still a defender who teams can take for 25-30 million easily. Exactly. You know, the likes of Spurs. He can easily go to Spurs for 30 million. Because Exactly. they play 3 at the back, and Maguire at 3 at the back, we have all seen what he can do it. Yeah, he can play better at 3 at the back. Yes, he can do. Yeah. Actually, you know, that's fine. You can be angry, but I'm just saying he should leave. I totally agree with leaving with part, but I am just saying, even if he's lifting the trophy, we have had captains who has played absolutely minor or no role in competitions, and they have lifted the trophy. You know, when we won the Premier League for the first time, you know, Brian Robson, he was absolutely on the verge of being obsolete. Yeah. But United made sure that he is lifting the trophy and he's playing enough minutes to lift the trophy. Exactly. If that comes to, you know, so we have done it in the past, and we are doing the same with Maguire. You know, he will be playing here and there. It's not like we will just totally isolate him. It's not going to happen. But we are not Chelsea, we are not Arsenal who will disregard players. What they have done with their players, it's absolute farcical what they have done with their players. But United is not like that. You know, United, for some reason, the philosophy is still alive in the club, apart from the owners, but still the philosophy is alive, and I think it's the right way moving forward. Yeah. Exactly. Jonathan, I see us finishing third behind City and Arsenal. I would counter that. I would love to finish at second, because for some reason I see someone falling down. I see someone falling down. Yes. Finishing second is the yeah, I would love a second, but I am content with third. You know, get a of course we'll be happy with it. Yeah. It won't matter if I think it won't matter if we finish second or third, but I'm seeing someone falling down. That's it. Yeah, let's see. Keeping fingers crossed. Yeah, see, actually, you know, there's two ways about it. Either I can just come out and rant. I do rant at times, you know, when decisions go against us. But there is no point ranting against our own team. If, you know, the way they perform against Brentford, the way they perform against Brighton in the beginning, I definitely had a rant. Yeah. You know, we all did. Yeah, just pinpointing one guy, you know, for every match. You know, that's why when I put up the Ole example, you know, the people get absolutely mad. Those who don't like Ole, they're like, "Oh, it was luck," and I'm like, "Give me Ole's luck, I beg." You know, if you can just get back-to-back top 3 finishes in the Premier League with luck, give me that luck. Seriously, man. Because I'm the most unluckiest person in the world. I need that luck. You know, if you can finish second and third, and I have had, you know, discussions and debates about that. And it was luck. Chelsea had players injured, Liverpool had players injured, and I was like, yeah, they had players injured for 2, 3, 4 months.
the player that we wanted to build our team around, he was not present the entire season. Pogba. Yeah. We had absolutely no cover for the centre back positions. Lindelof, Maguire kept on playing. And then you guys are talking about, it was luck. No, it was not luck. It was not luck. You can say obviously luck, that percentage, but you cannot put it everything on the luck. That's not how it works. Trophy, I think we can lift, and we should lift Carabao Cup. Yeah. We That's can. We are realistic. Too realistic right now. Too realistic. We can. Yeah. This and FA Cup we can get. FA Cup we can get. Like the real, like, अभी FA Cup is I think थोड़ा सा बड़ी journey है, but if you look at EFL Cup, I think it should be in our bag. Exactly. It's not gonna be easy because we've seen how good Newcastle has been throughout this season. But I think, bhai, if you watch yesterday's match, if you look at yesterday's match, we can break them. We can break them on current form. If you look at the West Ham versus Newcastle match, because I was toyed with them at Old Trafford. We toyed with them at Old Trafford. It was because of the referee we didn't get the game. Yeah, exactly. Yeah. Newcastle got Marlene says third and a couple of trophies. That would be great. Absolutely great, Marlene, to be very honest. Third and a couple of trophies, that would be absolutely huge. That would be absolutely immense. If it's Europa League, then it would be fun. Because we are beating Barcelona. We are beating the likes of many good teams there. Surely, it would be fun. Exactly. Anush Bhai saying, do you think Diogo Dalot is the best right back for United? No. I think we can easily get better right backs. At this point of time, we don't have options. In current team, you can say yes. But Aaron has done enough, yeah. Aaron has done enough in last few months. Well. Yeah, he has done well, but I don't think Dalot is the option. Yeah. We will see. Well, as I said, I'm not going to talk about the topic much more, to be very honest. And of course, we can lose him. We have done so much better without him in the last few years, in the last year or so. Even in this season, he's not there. Look at where we are. So deep down, we don't need him. Obviously, we can lose him. And we will see which, big team goes out and take him. We will see. Yeah. With so much on the line, we will see which team goes out and takes him. I think the only option he has is going to La Liga or Bundesliga, something like that. It will be difficult again. The reports are coming of China. China, I don't know, यार. China मतलब. उससे अच्छा ISL खेले फिर. India में even though we don't talk in detail about the women's rights and all, but यहाँ पे भी अगर भाई पता चलेगा कि टैग किस चीज का लगा है. It's very difficult. No, I think any league in the world would be difficult. But yeah, you can say about China because थोड़ा communist country है तो no one cares about exactly. Yeah. वो आधे लोगों को वहाँ पे पता भी नहीं होगा कि what Greenwood did. You never know. Yeah, exactly. पता चले. I think India has a lot of. I think India. That was मैं तो एक joke बना रहा था, but still India will be wrong place for him right now. Surely a wrong place for him. मैं बोल रहा हूँ कि चाइना अगर जाता है तो you never know. The moment he signs, उसके सारे आर्टिकल वगैरह गायब हो जाए नेट से because Chinese can do that. Yeah, totally. And after I think 4-5 years, he can make a comeback in Europe because everyone will forget about it, right? Yeah. At this point of time, I see is very, very unlikely. I see very, very unlikely. And जिसके जो thoughts process है भाई, I am not going to change that. For me, it's very, very unlikely. Unlikely. For me, it's very, very unlikely, and I don't see it. Like we say, everyone has their own opinion. Our opinion is totally dependent on the club, but we will not support it. Anyways, if he stays or if he goes, we are okay with it. But if you ask us about supporting him, no ways, we are not supporting him. We will not be, trying to explain that further. There's absolutely no chance. No. Okay. Hashley says we will finish second. Arsenal will not go all the way. They do not have the experience in their teams. They Ashley will fall, read but my at mind. the same point of time, we have a lot of games. Yeah. But for some reason, I think I'm overconfident. You can say मैं थोड़ा सा overconfident हूँ, but for some reason यार squad को देखूंगा और उसके बाद मैं एरिक्टन हैक को देखूंगा ना, तो ऐसा लगता है यार निकाल लेंगे हम लोग, second spot निकाल लेंगे, ऐसा मुझे for some reason ऐसा लग रहा है.
बट ठीक है, आई विल बी हैप्पी, लाइक सेकंड हो या थर्ड हो, इस कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल कैसा लग रहा है कि हाँ निकाल सकते हैं हम लोग. Ten Hag promotes Ajax and Dutch players. The Dutch player that he got us is an absolute butcher, you know. And the second one he got us, he is basically toying with the players in the opposition box. Yeah, he is not a finished product yet. Lisandro looks much more finished product than someone like Anthony, but don't forget he's just 22. Yeah, He's just 22, and if the manager is happy, definitely he's seeing something which we are not seeing. exactly. The fans who hate him basically already, that he's just a one trick pony or something like that. The manager says one thing, he keeps the field stretched. That's what he wants. Exactly. And भाई that's what he's doing. अगर थोड़े लोग जो अभी ओपिनियंस रखते हैं ना अपने, अगर वो पुरान मतलब जब सर एलेक्स थे तभी का फुटबॉल देखते थे, एंड तब व्हेन द टाइम वाज ऑफ रूनी, व्हेन द टाइम वाज ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, या फिर अलग अलग प्लेयर्स जो भी थे, बट हम लोग को जीसंग पाक दिखता नहीं था. लाइक सब लोग बोलते थे यार ये प्लेयर को किस लिए रखा है, बट द वे द वर्क ही यूज्ड टू पुट इन, द एफर्ट ही यूज्ड टू पुट इन, इवन इफ यू टॉक अबाउट कैरिक की भी कोई बात नहीं करता था तभी. अभी बोलते हैं यार कैरिक वाज अ ब्रिलियंट बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर. भाई उसका गेम ही ऐसा था कि वो दिखते नहीं है, बट you वो realize कुछ करते हैं टीम lose के when लिए. they are not with you. You realize the loss when they are not with you. Exactly. And Sir Alex ने तो बोलते हैं कि if I had put Jisung Park in the final against Barcelona, we would have won it. Exactly. ये तो open admission है. He considers that as one of his mistakes. Just imagine, Totally. not playing Jisung Park. Totally. So actually saying on Casemiro absence, we can go like De Gea, Aaron, Varane, Shaw, Malacia, Sabitzer. नहीं भाई, Martinez, we don't see him as a CDM. We don't see him as a CDM. Why do we have to? तीन players के you are trying to change the pitch. Exactly. And Erik ten Hag ने बोला कि Lindelof is has played in CDM, and he will play CDM if he wants. But Martinez, he knows Martinez का best position is at the left CB, and his left center back, his best position lies there. Yeah. That's what I'm saying, that this manager feels that over in that role as a CDM, in the CDM role, he can trust Lindelof more than Martinez, and that shows that he absolutely don't prefer Martinez anywhere else on the pitch apart from that center back role. Exactly. So he knows something about play him as a if he had to play him as a CDM, he would have tried it when there was no there was Casemiro in the Arsenal game. He could have tried it. But that game, he just would want it. He is very happy with where he is playing, and I think he will keep on playing that role. He will keep on playing that role, and that goes without saying. That goes without saying. So, chalo, before we wrap it up, realistic expectation without Casemiro in the next 3 games. Plus, what do you feel, should we do with Sancho in the upcoming games in terms of game time? How should we manage it? Anyways, Anthony is going to start. I want to see Anthony going off in the 60th minute in 2 Leeds game. I want to see Sancho coming in for the last 30-35 minutes. Leicester के game में I want Sancho to play because Leicester का game थोड़ा सा close game होगा. मतलब if you look at the Leicester defense and the way they have been approaching games, थोड़ा सा ज़्यादा low block खेलते हैं वो आजकल. So I think Sancho will play in that game instead of Anthony. Full time. I mean, like not full time. At least 50 to 68 minutes. So he's getting around 100 minutes in the next 3 games. And if you talk about the results, I'm expecting 9 points. For some reason, I'm really optimistic about it कि यार निकाल लेंगे हम लोग तीनों के 3 गेम निकाल लेंगे. बस we have to do our basics right भाई. Exactly. बस अगर ये करेंगे ना भाई, बस बेसिक्स राइट करेंगे ना भाई, क्योंकि ये टीम ने दिखा दिया भाई. ये टीम ने दिखा दिया. कभी कभार कुछ ओवरडू करते हैं तो मार खा लेते हैं, बट अपने बेसिक्स जब प्रॉपर कर रहे हैं ना, तो कोई भी टीम नजदीक भी नहीं आ पा रही भाई, छू भी नहीं पा रही अपने को. ऐसा है. More than anything, I think if we are just playing to our potential, जहाँ पे हम कॉकी नहीं होते ना, जहाँ पे हम complacent नहीं होते, that's how we get the job done in a very very
सिटी के अगेंस्ट सिटी Yeah. के अगेंस्ट वी कुड हैव जस्ट ट्राई टू जस्ट मेक श्योर कि भाई वन ऑल हमने कर लिया, चलो भाई जस्ट डोंट लूज द गेम. But that Yeah. self-belief was there कि we can go out and we can get the job done, and that we did. Done. So we Yeah, need that exactly. self-belief. Exactly. And at the same point of time, we cannot just go out and say, "Oh, ये तो भाई बड़ा easy सा game है, we will just go out and knock it out of the park." हाँ. That's not gonna happen. PL में कोई ऐसा गेम नहीं मिलेगा. नहीं मिलता है, राइट. तो वही बता रहा हूँ कि हम लोग No? बस अपना बेसिक्स राइट करेंगे तो निकल जाएंगे भाई. 3 games will be मैं तो आराम से बोल रहा हूँ निकल सकते हैं games. चलो मुसाफिर भाई, thanks a lot for joining in, and we will see you very very shortly as well. एक है ओल्ड सांचो बैक सून वेटिंग भाई. हम सबकी सारे फैंस हुआ है कि ओल्ड सांचो दुआ यही है भाई. दुआ यही है. Once he starts to perform, as I said, he gives us so much options. Rashford को हम खिला सकते हैं as a striker, Sancho on the left, Antony on the right, Garnacho can keep on getting the few minutes that he is keeping. He will keep on improving. मतलब पूरा dynamics change हो जाता है सांचो के आने से, because he can play on both the sides. Exactly. So and you will guys, see him play. Yeah. Sorry, Musabir. Yeah, we will definitely see him play. It's just about we don't have to rush. हम over expect करने लग जाते हैं the moment anyone gets back. कि भाई अब आ गया है, ये अगले 10 गेम में 10 गोल 12 असिस्ट. तो वो वाली एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम रखनी पड़ेंगी. And we can, we have been very patient with him for the last 2.5-3 months. Manager has been very very patient. All we can do is just support the player. True. And पृथ्वी भाई से अगर लुकाकू भी बोल देगा एरिक टेन हाग, तो अभी मैं उसको भी मान लूंगा भाई. It's Erik ten Hag madness going on. Yeah man, true. Because I think मैनेजर ने बहुत कुछ अच्छा कर दिया यार टीम के साथ में, तो उससे क्या हो रहा है ना, फैंस भी लाइक दे आर रियली ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ निकाल देंगे भाई, निकाल देंगे. इवन इफ यू आर 1 goal down ना, इवन इफ यू आर 1 goal down, वी नो कि यार निकालते हैं गेम, निकालते हैं, एटलीस्ट ड्रॉ तो निकालेंगे. ऐसा वाला सीन हो गया. If not for that VAR decision against Arsenal, we could have gone the draw as well. Yeah man, seriously. That sucks. मतलब ये 2 पॉइंट वहां, मतलब 1 पॉइंट वहां, ठीक है, 1 पॉइंट वहां और 2 पॉइंट जो हमने ड्रॉप किया अगेंस्ट न्यूकासल. These 3 points, and all of a sudden, the table is looking much more, compact in terms of a title race. Seriously man, seriously. चलो मुसाफिर भाई, I will see you soon. Stay safe, and भाभी को भी नमस्ते. Thank you so much, bye. Thank you so much for having me, guys. Thank you for watching, and thank you. Bye. So guys, मुसाफिर भाई का चैनल मैं हमेशा बोलता हूँ, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नहीं आता, लिंक जो है टाइटल में ही होता है. So just click on it, subscribe to the channel, and you will have regular content on a daily basis. So stay tuned to both our channels and keep supporting us. That's what I can say. That's what he will always say. So thanks a lot for joining me. Bye guys. Have a great Sunday and good night. Good night.